Get anything else? कि डीपी ऐसा मेरे जैसे कोई है जो is like, oh my god, that's love, that's beautiful. Anyone like that? Anyone like that? So you have two or three hands raised. You You have can company here. you can speak. You can speak. Uh, Girls, why don't you all unmute yourself and You can unmute and speak, speak? okay? You can Yeah. unmute and speak. Only if I say like you can unmute at the same time, okay? I don't have any issue with that. You may speak in No? Hindi, that's still okay. Yeah, I don't Yeah, have problem. and actually, good morning. I Mm-hmm. actually fear of the snake, but I like that snake because something new and innovating and adventurous is to hand over these snakes in our You hands. can speak in Hindi. You can speak in Hindi. It's okay. Right? Chill. ओके Calm down. मतलब क्या स्नैक्स मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि कुछ ऐसा एडवेंचर्स है ना कि हमने हाँ बाबा स्नैक को हाथ लगाया और कुछ नया सबसे अलग किया है ऐसा फील होता है इसके लिए Okay, that is something different. Fine. आई वॉज इन द कैम्प मतलब मैंने एक कैम्प किया था उसमें मैंने किंग कोबरा मतलब ट्रेनिंग था हमारा ट्रेकिंग कैम्प उसमें मैंने किंग कोबरा को हाथ लगाया था Okay. फॉर द मतलब फियर होने के बाद भी मैंने क्वीन कोबरा को हाथ लगाया ये मेरे And where was this camp exactly? हाँ Where was this camp exactly? एट द पुणे Okay. या Fine. Okay, so good you did that, but let me tell you that is totally unofficial. You cannot touch a snake without getting a proper ID card or anything like that. You have to deal with the forest department if you are doing that. That's totally against the laws, and no one can tell you to go and take a snake. And if that pictures get viral, then you can get into trouble. You can fall into trouble. So see to it that you're not doing it next time. So let's go for the first slide. Can someone please change the slide? Okay, Yeah, so it's come up. yeah, so this slide, if you see over here, the northern guard, the western guards, okay, and the central guards. So this place, the green patches all over. This is the main biodiversity of India, where you get number of snakes, number of beautiful snakes, and other wild animals, and mostly all amphibians and reptiles are very well known in this kind of areas. These are the western guards of India, which are very it's a big hotspot for the wildlife, and specifically amphibians and reptiles. Next slide, please. Next slide. Okay. So this photo which you see over here, okay, it is from this Nag Panchami, okay, Battishirala. There's a village in India in Sangli, and that area, that place, the village is known as Battishirala. So Nag Panchami, it's a festival of people pleasing for snakes and all. So ये सब वहां से चालू हुआ है बत्तीस शराला से बत्तीस शराला में क्या होता है ना कि एवरी ईयर द होल विलेज पीपल ओके वो लोग जाते हैं दे ब्रिंग स्नेक्स फ्रॉम द वाइल्ड दे डू पूजा एंड दे प्रेज द स्नेक और उनका मानना ऐसा है कि सांप के सामने जब वो लोग दूध रखते हैं तो सांप दूध पी लेता है तो उसमें साइंटिफिक रीजन ये होता है ना कि when they bring the snake okay what they do is they keep that जो चावल का जो होता है जो वो I don't know what it is called it's very fluffy okay and they keep milk also rats get attracted to it rats come over there they eat it they drink the milk and what people think and snakes come behind the rats okay and what people think that सांप ने दूध पिया ठीक है बट वो चूहे ने दूध पिया होता है सांप तो सिर्फ चूहे के पीछे रहता है right? So, or सांप दूध नहीं पीता. So this all started from there. It is well-known village. You can YouTube it, you can Google it, you'll get many things about that place. Okay, next slide.
Next slide. Let's start with the first snake which we see over here. So this is a rat snake, a totally non-venomous species. Nothing is going to happen even if the snake bites you. How to identify the snake? How to identify the snake? Okay. So the first thing which you have to notice is, आप लोग ऑब्वियसली इतना करीब तो जाओगे नहीं उसके, यहाँ उसको देखने के लिए कि कैसा दिख रहा है, तो दूर से कैसा दिखना है, उसका हेड छोटा होगा, उसका बॉडी बड़ा होगा. If this is the size of his head, body, this will be the size of his head. Okay, this will be the main thing which you have to see. Okay, comparatively to other things, this is the only main characteristics we can, जो आप दूर से देख के बता सकते हो. Second characteristic is उसका जो half of the body है, उसके ऊपर आपको patterns नहीं दिखेंगे. The first part of the body, second part of the body, you are going to get patterns. If you see the x-axis, you will get x-axis over there, the patterns. Besides that, it also does the mimicry of being a cobra sometimes. Okay, so what happens is, cobra, how cobra stands, if you see. So cobra stands like this. Okay, totally. But rat snakes won't do like that. They'll stand like this, straight. Non-venomous species. Now, can anyone unmute themselves and tell me why it is called a rat snake? Any idea? Maybe he's eating the rats. 60%, right? Speak up, speak up. I want you people to interrupt with me. Come on, talk to me. Structure is Open up. like rat, body is big and head is small. Even that's comparative. Like we can also say yes, but it's not a proper answer. Dusra, speak up, speak up. Come on, speak up. Anyone? रेड का मुंडी छोटा होता है, बॉडी कंपैरेटिवली बड़ा होता है, प्लस वो वेनमस नहीं है. सो दो कैरेक्टर सिंक्रोनाइज. Nah, not that. Okay, I'll tell you. First of all, every snakes. Okay, Sir, except, huh? because it rattles its tail. No. It is a non-venomous snake. It doesn't have any rattles on its tail. Nothing like that. Okay, I'll tell you. सब चूहे खाते हैं बराबर. हर एक साल में देखते हैं. Rat, uh, rat is the favorite food of snakes. Rat is a favorite food of snakes, but specifically फिर सब सांपों का नाम rat snake क्यों नहीं है? इसका नाम क्यों है rat snake? They have many population, like their numbers. No, I'll tell you. So as I said कि सब चूहे खाते हैं, ठीक है? But rat snakes are well known because they eat more rats than other snakes. एक बड़ा adult rat snake जो एक 7 to 8 feet long होगा, ठीक है? He can actually eat up to 4 to 5 goose, बड़े वाले, which is nearly impossible for other snakes to eat. Nearly impossible. They cannot eat that. बड़े goose की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे वाले चूहे की नहीं बात कर रहा हूँ, बड़े वाले जो चूहे होता. एक adult rat snake एक टाइम पे 6 से 7 goose भी खा सकता है if it is like more than 9 feet or 10 feet. This is the main reason why we call them rat snakes. The scientific name is Tias mycosa. Change. A totally harmless snake, okay? And the second identification characteristics you have to see to it that, और वो दिख जाता है usually. If you are like almost 10 meters away, you can see that. You will see bands on his eyes, under his eyes. पीछे la next slide, please. And can you zoom it near his eyes? By any chance, can you do it? If you see near his eyes, you will see bands under his eyes. You will see 4 bands under his eyes. So that is also a main characteristics. Okay, change. So this is a very beautiful snake. I love it. It's known as common trinket. Again, a non-venomous species. How to identify? It's a common trinket.
फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बताने का भी जरूरत नहीं, बिकॉज ये मुंबई में बहुत कम मिलता है, कंपैरेटिवली बहुत कम. एंड इफ द प्लेसेस वेयर यू गेट इट इज नियर बाय थाने, Mulund, like this is a patch where you get this kind of snakes. But if you go Navi Mumbai and all, there you won't find that much. So common trinket, it's a non-venomous species, a very beautiful species. Okay, and how to identify? If you see the head, it's a brown color snake which has a two stripes on his body, on a postal body, and even he has a line sideways on his eyes. Second thing, he has white patches and white and black dots from his neck, starting from his neck to the mid body. And half of the mid body, you will see no colors, like you can see over there. Got that? Yes, sir. Speak up. Okay, next slide, please. So this is a snake which you guys can always मिल जाएगा. बहुत common species है, बहुत common species. All over Mumbai you get the snake. So the snake is known as common wolf snake. Lycaon olicus is the scientific name of the snake. And how to identify the snake? ये साहब ज्यादा बड़ा नहीं होता, सब बड़ा ज्यादा नहीं होता, ठीक है. द साइज, जो बेबी साइज मैंने अब तक देखा है इन माय करियर, दिस वाज द स्मॉलेस्ट साइज व्हिच आई हैव सीन. This was the smallest size from year to year, and the maximum size can go be like 5 feet is the max size, or 5 feet be like it's a very occasion, बहुत rare, बहुत rare. और second thing is it's a brown color snake. You have to keep this in your mind, okay, because it's a very common snake. You may find it in your bathroom specifically, because what happens is in your bathroom there's a bulb, there's a light. Through the light, mosquitoes get attracted to it. For mosquitoes, lizards come over there, house lizards come over there, and to eat the house lizard, these species come over there. These are very good wall climbers, very good wall climbers. एक सीधी दीवार होगी ना, तो this is the only snake who can climb straight. This is the only snake who can climb straight. Okay, so a very aggressive snake, but at the same time he's very non venomous snake. कुछ नहीं होगा, काटेगा तुम, ठीक है. How to identify a wolf snake? The body. If you see, I told you, पतला सा होगा, छोटा सा होगा, ज्यादा बड़ा सांप नहीं होगा. Second thing is, if you see at his snout, okay, तो like this kind of snout it is, कुछ ऐसा snout होगा, okay. Third thing, flat होगा उसका face, comparatively to other snakes. Other snakes don't have that flat face like as he has. You mostly find it in the cracks of the wall or under the piles, और ज्यादा करके दीवारों पर ही मिलेगा, और रात के टाइम पे मिलेगा. Wolf snakes are only active during the night time. They are not active during the daytime. They are nocturnal species. Coming on the band, wolf snake का जो band चालू होता है, it starts from the neck. It starts from the neck, going to the just get continued, and you have to see the band. Okay, can anyone zoom show it over here on the first photo how the band is starting from the neck, because this is very common species and very important to know about, because what happens is there is one more snake which is a highly venomous snake, and it's crate, Indian common crate, and people get confused between common crate and wolf snake, and they try to be like, okay, this is a crate, I can catch him or something like that. So it's a wolf snake, okay, thinking that it's a crate. ताकि पकड़ने की कोशिश करते हैं, they get bitten and they think that यार nothing, कुछ नहीं हुआ यार, जहरीला सांप थोड़ी है. मेरे को तो, हमें तो कोई तो आदित्य सर थे जो हम लोग को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, एंड ही टोल्ड कि कुछ नहीं होगा, काटेगा तो. बट उन्होंने ये बोला था कि वुल्फ स्नेक अलग होता है, क्रेट अलग होता है, वो आप लोग को याद नहीं आएगा. सो वुल्फ स्नेक के हेड के यहाँ से बैंड चालू होते हैं, और क्रेट को बैंड हेड के यहाँ से चालू नहीं होते हैं. ही गेट्स हिज बैंड फ्रॉम हिज बैक, और वुल्फ स्नेक का जो फर्स्ट बैंड होगा, इट स्टार्ट फ्रॉम हिज नेक. Okay, and never try to rescue a snake. Tell that you're not professional. Second slide. Again, a very beautiful snake, and this is known as common kukri. आप लोग को मजा आ रहा है कि बोर हो रहा है? मजा आ रहा है. आ रहा है.
Are you Yeah, that's sure? Any doubts? Yes, sir. Any doubts? No, sir. No, sir. मैंने फर्स्ट स्नेक का तो आप लोगों को तो बता दिया था अबाउट व्हाट ही ईट्स. सेकंड स्नेक का मेरे को किसी ने पूछा नहीं. सेकंड और थर्ड स्नेक का किसी ने पूछा नहीं कि व्हाट ही ईट्स. You said that third snake eats flies and all. He's near them. Lizards. Yeah. You got me right. You got me. Common birds eat lizards, home lizards. Yeah, he eats eat lizards and but इतना जब भी छोटा होगा तब क्या खाएगा? कुछ आइडिया? Insects. What insects? And how? Okay, so they eat small frogs, very small frogs. You get small frogs like this kind also. Then they eat eggs of geckos, छिपकली के अंडे और ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं जो खा सकते हैं. छोटे छोटे चीजें छिपकली के अंडे हो गए, फिर ग्रास इसके गार्डन लेजर्ड के अंडे हो गए. So they eat that when they're very small and they grow. So this snake is also a very common species in Mumbai, but you don't get it much because these are mostly burrowing snakes. Okay, ये आप लोग को आपके घर के आसपास इतने नहीं दिखते जितने बाहर दिखेंगे. So it's a common kukri. Any guesses why this snake is known as common kukri? Any guesses? Speak up! Speak up! Speak up! Who knows what is a kukri? Can anyone speak up? Kukri means Nepali's knife. Oh, you got it so perfect, you know. You got it so perfect. नेपाली की जो नाइफ होती है, so this is the structure of that knife. अगर आप you can Google it later, okay? And it's a very sharp knife. It's a very sharp knife. Okay, so what happens is ये जो कुकरी स्नेक है, इसके जो दांतों का स्ट्रक्चर है, it is like kukri knife, and they are so sharp. They're that sharp. If it bites you, the bleeding won't stop. The bleeding won't stop. Actually, besides this, how to identify it? Okay, yellow color snake, goldenish yellow, something like that. Okay, small snake. The smallest kukri which I have rescued till now is this size. When they are small, they survive eating uh, lizard's egg, termite egg, like this kind of things. And after that, when they grow up, even they start eating like termites, like termites, and then they can eat geckos and other small animals, small frogs. You also get frogs like which are this size. Okay, they eat that. They eat They eat reptiles' egg. sorry. Reptiles' egg. Reptiles egg, it's not possible because wolf snake और दो तीन species ही है जो बहुत छोटे अंडे देते हैं. Rest of the species they are like that, like this size eggs. I had cobra eggs जो इतने बड़े थे. I had rat snake eggs which जो भी इतने बड़े थे. So I've rescued them. So सांप ही उतना सा होता है जब पैदा होता है. तो like how can he eat? सो तब वो दूसरे जो छोटे जानवर होते हैं उनके एग्स ईट खाते हैं और सर्वाइव करता है. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, wait. I'll tell you one thing. So this is a juvenile photo. Okay, this is a juvenile photo. When they grow up, their body start turning into black, more into black. उनके स्किन के ऊपर एक अलग सा ब्लैक शेडीनेस आ जाता है. Okay, so they are not that beautiful when they are younger. Change now. Hello. Hello, Go to the sir. next. Yeah, Tony. Hello, sir. Mhm. Most black rat snakes भी होते हैं क्या? हाँ, black rat snakes भी होता है. We'll do the question and answer later. Okay, will that be fine? Okay, sir. Yeah. Okay, so this is a very common snake during the monsoon season in Mumbai. Okay,
इट्स अ बफ स्ट्राइप किलबैक, जिसको आप लोग ने नानीटी के नाम से भी सुना होगा। मुंबई में बहुत जन बोलते हैं नानीटी नानीटी करके। गांव साइड में अगर कोई जाओगा तो आप लोग नानीटी नाम बहुत सुनेंगे। कभी किसी ने सुना है? I guess नहीं सुना है। Okay, so this is a male. I can easily tell it because if you see the color on his neck, okay, it's not that yellow during the normal season. Okay, during the mating season, the male actually like उसका जो गला है नीचे से वो येलो हो जाता है। Okay, Olive green. sorry, Olive green color. it's not olive green. It's yellow. Okay. I'm talking about the color which you see on his neck. You see that yellow, right? Can you speak up? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Again, no, it's not olive green. It's yellow in color, and that one is a male. I can easily tell it because during the mating season they actually change it. Okay, normally it's like white under the scales, but during the mating season they become very dominant. So that is the reason why they change the color. Beside that, it's like half of the body. If you see, you will just see patterns: black, brown, black, brown, black, brown, and after that you will see that there are stripes on his body. Okay, और बारिश के टाइम पे इट्स लाइक आप लोग ने कभी सुना ऐसा एक एक ही जगह पे 8-8 10 सांप है? Yes. Yes. No. Yeah, this happens because of pheromones, because of sex gland, which snakes use to come in contact with other snakes during the mating season. So, and सबसे ज़्यादा अगर जो कोई सांप है जो like इसका बहुत यूज करता है, so these are manatees, these are buff strap keelbacks. And मैंने एक टाइम पे एक लोकेशन से 16 buff strap keelback रेस्क्यू किया, एक लोकेशन से, और वो एक के घर के अंदर। 60. And it's a totally harmless snake. Nothing is going to happen even if it bites you. And बहुत beautiful snake है, बहुत calm होता है। Like first of all वो काटता नहीं है। Even if you take it in hand, he won't even do anything. Comparatively to other snakes, he won't do anything. And the identification mark, half of the body, as you can see, it only has stripes. Half of the body doesn't have stripes. When the snake get aggressive by any chance, so can you see that blue shine between the scales? So what he will do is he'll stretch up his scales, he will show himself bigger, and the blue shine from inside will pop up like it looks so beautiful that time. So that is how they use it as a defense mechanism. The second identification characteristics, as you can see, is eyes. It has oval eyes. Okay, black eyes. Go to the next slide. I guess this is going a bit boring. Yeah, come on, speak up, guys. You can see the name of the snake, right? Speak up. Yes or no? Yes, sir. Okay. So tell me, the name of the snake is checkered killback. मेरे को कौन बता सकता है कि इसको checkered killback क्यों बोलता है? Come on, speak up, speak up. Yes. Beg your pardon? सर बिकॉज उसकी बॉडी पे जो मार्क्स हैं इसकी वजह से। Perfect. You got it. You got it. Okay. So first of all, this is a water snake again. Okay, जो buff strap killback था, even that was a water snake. Even this is a water snake. Okay, buff strap killback is not easy to find after monsoon. ठीक है, not easy to find. इतना like जैसा हम चाहिए वैसा नहीं मिलता. And I forgot to tell you about buff strap killback. They are very good in predicting the weather. Okay, like I can tell you कि buff strap killback का क्या होता है ना कि before rainy season, when we start getting rescue calls for and mostly the snakes are buff strap killback, then I can easily tell out that in next 20 days uh, it's going to rain. और definitely वो होता है. Okay, and checkered killback, it's a very common species. आप लोग कहीं ऐसा जंगल में भी घूम रहे हो और कहाँ पे नदी वदी देखे, so this is a snake which you will definitely find over there. It's a black color snake, okay, black and white, which has a yellow head,
when they're baby, you get different morphs in Mumbai. So the second morph is like in greenish in color, in olive greenish in color, something like that, and it has checks on his body. Okay, very aggressive snake. It has two stripes on his eyes, under his eyes. The main identification. Very aggressive snake. I don't think so. You will be able to see the mark over here. नहीं दिख रहा है शायद. Yeah. बहुत डीप बाइट होता है इसके, बहुत डीप बाइट होता है. आई हैव अ बाइट एंड दिस बाइट वाज लाइक ऑलमोस्ट 6 years back and I still have a mark on my hand. और दूसरे कोई भी सांपों का मार्क नहीं है मेरे हाथों में, बट इसका डेफिनेटली है बिकॉज बहुत शार्प टीथ है, बहुत शार्प. एंड ये क्या करता है ना कि as these are water snakes, so water snakes has to be mostly aggressive or venomous. If the snake is not venomous, then he will be definitely aggressive because they catches fishes, they prey on fishes and frogs and all something like that. So अगर कोई जानवर को इन्होंने काटा या पकड़ा, so that time ये नहीं होना चाहिए कि वो जानवर भाग गया, ठीक है. तो जैसे पकड़े वैसे ग्रिप में आ जाना चाहिए वो जानवर, ताकि इनको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े. सो दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव दैट sharp and cold teeth. Okay, go for the next. Again a keel bag. Just take behind. I forgot to say something more. Now, can anyone tell me what is a keel? Any idea about what is a keel? Keel back करके दो बार नाम सुन लिया, अभी तीसरा सा भी कील है. Can anyone tell me what is a keel? Speak up, yes or no. Even if no, it's okay. I can explain. Base. Beg your pardon? Yes, bottom. Base. Part of a ship. Sorry? Part of a ship. Google. It's okay. I'll tell you. आप लोग ने बोट देखा होगा, आप लोग ने शिप देखा होगा, बराबर. तो जो शिप के नीचे वाला पार्ट होता है, so this is like that. Okay. अच्छा ठीक है. The best example is किसने चावल देखा है जो राइस जो शेल में कवर होता है? Speak up. देखा है जो शेल में कवर होता है, जो ब्राउन कलर के शेल में कवर होता है. Yes, Yes, Yeah. sir. You see that mark on Yes, it? sir. You see that mark on it? Yes, That sir. is a keel mark. That is a keel mark. Okay, and the snakes are called keel mark because उनके body जो scales होता है, those are keeled snakes. वो hard scales होता है और उनके scales के ऊपर एक keel mark होता है. Just because they are water snakes, mostly so उनके body पे keel mark होता है कि उनके body पे पानी का उतना ज़्यादा effect ना हो, उनके skin पे उतना ज़्यादा effect ना हो, comparatively to other snakes. दूसरे सांप पानी में नहीं रह सकते इतना टाइम जितना ये पानी में रहता है. So they have strong scales which has keel marks on it. Okay, next one. So the snake which you see over here, when this is a very docile snake, very docile, very calm. आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि इस सांप ने मेरे को काटा है या मेरे किसी फ्रेंड को काटा है, आज तक कभी नहीं देखा. So it's a green keelback, totally harmless species. Nothing is going to happen even if it bites you. That doesn't mean that you should go and catch it. Okay, so you do it. You don't do it. Both are the same food snake. Okay, both are green keelbacks. Can you tell me what is the difference and why there is a difference? Anyone? Maybe the color. The Yeah, color. Okay, color is the thing. Why? Why? The second one is young. Yeah, that's right. The baby snake. Yeah, when these snakes are baby, na, so their color are very bright and very bright. Okay, so it's easy for them to hide in small grasses, you know, जो exactly उसी color के होता है. And flowers के बीच के झुंड में भी ये लोग छुप जाते हैं आराम से. They get camouflage very easily when they are small. Okay, comparatively when they grow up. Okay, तो अगर इतने बड़े बैंड होंगे, ब्लैक बैंड होंगे, येलो बैंड होंगे, एक green keelback when it is a baby, उनको एक ही बैंड होता है on their neck which is yellow in color. Okay, जैसे से वो बड़े होता है वो कलर फेड होना चालू होता है, and that is an adult. And when they grow adult,
So उनका कलर पूरा बैंड सारे निकल चुके होते हैं, okay, which makes them easy to camouflage in nature, which they makes them very easy to camouflage in nature. It's not male female, but it was a good try. Thank you. Uh, so it makes them very easy. Again, a non-venomous species identification is it's a green color snake. It's a green color snake which has with the you can see the baby photo which has a yellow band, okay, and black bands also. When it grows up, you won't see any band, and you won't find him on trees. Okay, see to it you don't find it on trees, because you might compare him with bamboo pit viper, which is a venomous species. Bamboo pit viper you won't find it on land. These are active snakes. Bamboo pit viper is not that active on land, but these are very active on land. Okay, and yeah, that's it. About the eye, again a round pupil. Can anyone tell me between a round pupil and a pupil which has a like cat के आंखें जैसे होती है, बिल्ली की आंखें, और राउंड pupil, इसमें क्या फर्क होता है और क्या क्या फायदे होते हैं इस चीज के? Next slide. Okay, so he has that kind of heights, but it's vertical. Can anyone tell me? Sir, I have seen Maybe the they snake. can see in night. Anyone else? Anyone else? Speak up, guys. Speak up. Speak up. Anyone else? Sir, Okay. maybe they can see all over. Okay, I'll tell you. So the first person who said maybe they can see in the night time, yeah, that is so perfect answer. If you see बिल्ली की आंखें भी थोड़ी कर्व होती है, and वो रात को अच्छे से देख पाते हैं. Okay. Dogs अच्छे से नहीं देख पाते because they have round pupil. So every species who is a nocturnal species who is mostly active during the night time, उनकी अगर आप आंखें देखोगे, बिल्ली को भी अगर देखोगे तो दिन भर सोई रहेगी और रात भर मस्ती करती रहेगी. तो एवरी स्पीशीज हु एज अ नॉक्टर्नल स्पीशीज, नॉक्टर्नल मतलब जो रात के टाइम पे ज्यादा एक्टिव होता है, रात के टाइम पे शिकार करता है, तो उनकी आंखें ये होती है, व्हाट दैट परफेक्ट वर्ड, आई एम नॉट गेटिंग इट, इट्स ऑन माय टंग बट आई एम नॉट गेटिंग इट. तो आप लोगों को इशारे से समझ लो तो ओके. एंड ओके, सो कमिंग टू द बैक टू द स्नेक, it's a common vine snake, a very common species during the monsoon season in Mumbai. एंड सब बाजू मिलता है मुंबई, सब बाजू. ठीक है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर नहीं मिलता, सब बाजू मिलता है. इट्स वेरी कॉमन इन ऑल द स्टेशंस एवरीवेयर. यू मे मोस्टली फाइंड इट ऑन द ट्रीज रात के टाइम पे. इफ यू वांट टू सी द स्नेक, so you can go Matheran. That is the best place I can tell you to go it for, to look for it. Because माथेरान पे आप लोग को इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है जितना आपने आपके घर के आसपास ढूंढने की जरूरत होगी. माथेरान में जिस रात को अगर आप लोग निकला है, just take the torch and just find it on the trees. You will get like एक झाड़ पे यहाँ पर, एक झाड़ पे यहाँ पर, एक झाड़ पे यहाँ पर है, इतना बहुत ज्यादा क्वांटिटी होता है. So it's a vine snake. You cannot say that it is a non-venomous. Okay, now comes to the semi-venomous part. Okay, so these snakes are semi-venomous. Semi-venomous मतलब they have venom. उनको जहर होता है, उनको जहर के दांत भी होता है. Okay, but उनका जो venom का जो पोटेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो ह्यूमंस को मार सके. So that is the reason why it is called semi-venomous, not venomous. Second thing is how to identify it. Okay, a green color snake with a pointed head. Okay, second thing is it like बहुत पतला सा बॉडी का, बहुत पतला सा, बहुत स्मूथ. Okay, टेल भी बहुत लंबी होगी because it looks like wine. You got that right? Do you know what exactly is a wine? Wine पता है किसी को? जो झाड़ की जो बेलें होती है उसे हम वाइन बोलते हैं, पता है? Yes. Yeah. Yes. So it looks like a wine. So that is the main reason why it is called a wine snake. And it is like, you know, if you're not, अगर आप लोग के रात के टाइम पर टॉर्च नहीं है तो it will be very difficult for you to find him. Very difficult. एक टॉर्च मारो तो you can easily trace him because उसका कलर चमकता है वैसा. It's so bright that time when you put torch on it. And so this is on the left side picture, you will see he himself in nature, and on the right side I guess I can show you a video for a wine side.
how beautiful they are. You see this? I guess it's not like that. Okay. You see this? So this is a wine snake, and can you see how beautiful it is? Can you see how long its tail is? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So this is from Matharan, and these are very beautiful species. Very beautiful species. Trust me. Next slide, please. Now comes to another snake. So Okay. how much is dangerous, means harmful? It's not harmful for humans. It's not at all harmful for humans. And second thing, when a snake is aggressive, when a wine snake is aggressive, so what he will do is, I'll show you the photo. Right away. He will open his mouth wide open. I have my own picture clicked. I'll send you. I'll show you the photo. This is important, like, to show you how what they exactly look when they're aggressive. So if you see this photo, I guess it's not that clear. Uh, so what happens is, when these wine snakes are aggressive, they will open their mouth wide open. They will try to make themselves big. ओके अपने आप को बहुत बड़ा बताएंगे, और उनकी जो स्केल्स होते हैं ना, वो स्केल्स वो लोग खोल देंगे. They open up their scales, and between the scales there are white lines and black lines. Okay, तो वो बहुत ज्यादा bright दिखते हैं वो टाइम. So when any snake does that, when any snake is trying to make them huge, so see to it कि he is warning you, he's showing you that yeah, be away from me, I'm scared of you. So that is only reason he's like, मैं ज्यादा बड़ा दिखूंगा तो ये मेरे से डर के भाग जाएगा शायद. But I'm human there. Coming to the snake, so this snake is known as common So cat what do they snake. eat? Wine snake, they mostly eat birds, lizards, geckos, small birds, eggs, bird eggs, as they are arboreal reptiles. Arboreal मतलब झाड़ पे रहने वाले. तो वो लोग ज्यादा करके वही चीजें खाते हैं जो झाड़ पे मिलती है. तो झाड़ पे छिपकली भी मिलती है आपको, आपको छोटे बर्ड्स भी मिलता है. और जब ये हंट करते हैं ना अपने बर्ड्स के लिए, तो बर्ड्स को पता भी नहीं चलता कि आजू बाजू में आए हैं, बिकॉज दे लुक, दे camouflage so beautifully in nature. They camouflage very beautifully in nature, and they will come and directly grab it. Like इतना बड़ा मुंह खुलता है उनका wine snakes का. They are very beautiful. I have seen that thing. Coming to this snake, okay, we don't have much time, I guess. Yeah, we got just for 30 minutes more. Okay, so coming to this snake is known as cat snake. Now, can anyone tell me why the snake is known as cat snake? Because of its Because they look like cat. Because because they of its eye, the eye pupil is vertical like cat. Perfect. Perfect. So now there are both the snakes are different, okay, but the same species. On the left hand side, it's a Bidom's cat snake, scientific name Bioga bidomi. On the right hand, you will see a common cat snake, scientific name Bioga. Oh, fuck. Okay. Common cat snake, Bioga bidomi, Bioga siloni, Bioga forsteri, something like that. I forgot it. It's okay. Okay. So how to identify a common cat snake? First of all, you will see the eyes. The snake is brown in color. You have to keep this in your mind. The snake is brown in color. If you focus it on your head, you will see a Y on his head. Can you see that Y mark on his head on the right hand side photo? Yes. Yeah. Yes. Yeah, you have to see this, and you have to keep this in your mind. Cat snake, it has eyes like cat, and it has a white color shape, Y shape on his head. And बाकी pattern अगर आपको याद रखना पड़ेगा वो pattern कैसे है to identify it. Okay, brown color with skin color के patches होंगे उसके body पे. And on the left hand side, it's same. Bidom's cat snake का थोड़ा सा अलग होता है, but you don't get Bidom's cat snake that much in Mumbai comparatively how you must get the common cat snake. So I'll tell you about the common cat snake, which is more visible for you in Mumbai. Going on the next snake. Again, the snake is a semi-venomous snake, and like the cat snake, it's a semi-venomous snake. It has venom, but the venom potent is not at all that strong that it can kill a human. Okay.
बट हाँ, इसका जो वेनम पोटेंट होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिवली टू वाइन स्नेक्स, बट इंसानों को कुछ नहीं होता। चिल। कमिंग ऑन द स्नेक, क्या बोलते हैं इसको? एनी गेसेस? हिंदी में क्या बोलता है? Come अजगर. on. That's all right. Or okay. So the snake is very common during the winter season. Okay, like January, February, March. January, February के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा common हो जाता है, because what happens is ये इनका mating season होता है. Okay, मेटिंग सीजन, तो मेटिंग सीजन के टाइम पे फेरोमोन्स जब कोई फीमेल रिलीज करती है तो उसके थ्रू ये मेल जा जाता है, ठीक है। तो बहुत मिलता है हमें पाइथन ड्यूरिंग द, नहीं तो मोस्टली जो इनका सीजन है दैट इज, या ओके, आई एम सॉरी, या सो मोस्टली जो इनका सीजन है दैट इज रेनी सीजन। मानसून सीजन में आपको पाइथन्स बहुत मिलता है, बहुत मिलता है इन एंड अराउंड मुंबई, इट्स वेरी कॉमन। ओके, यू गेट इट इन योर बिल्डिंग्स, यू गेट इट इन योर हाउस। सैन धारावी में हमारा रेस्क्यू है लास्ट ईयर, घर के अंदर पतरे के अंदर एक पाइथन था, एंड वहाँ पर आजू बाजू, तो अगर आप लोगों ने बोला होगा कि कोई जंगल नहीं है, बट नहीं, वहाँ पर जंगल है आजू बाजू में, वहाँ पर बाजू में मैनग्रोव्स है। तो ज्यादा करके रॉक पाइथन अपने मुंबई में मैनग्रोव्स के यहाँ पर रहता है। ओके, सो दे कम आउटसाइड फ्रॉम द मैनग्रोव्स व्हेन पानी का जब फ्लो बढ़ जाता है या भर जाता है पानी, तो दे कम फ्रॉम दैट नाला एंड ऑल। और इट्स वेरी कॉमन मानसून के टाइम पे, बहुत कॉमन है। एंड बिसाइड दैट ठंडी के टाइम पे ओनली लाइक January, February, this is the time when they meet. So you may find it ज़्यादा that time. और मेरे जितने भी रेस्क्यूज है पर्सनली अब तक मेरे को ज़्यादा करके सब ठंडी के टाइम पे मिला, और huge ones like 14 feet, 15 feet, 12 feet, like that kind of seas. And coming on identification, it's a very huge snake, very huge snake. Okay, देख के कोई भी बता सकता है it's a python. Okay, the patterns on this body are totally uneven. ओके, अनइवन पैटर्न्स, इतना याद रखना। पीपल कंपेयर पाइथन विद रसेल्स वाइपर। रसेल्स वाइपर के जो पैटर्न होता है वो इवन होता है, एक लाइन में होता है, बट पाइथन के वैसे नहीं होते। पाइथन के अनइवन पैटर्न्स है, कहीं पर भी कहाँ पर भी पैटर्न्स हो गया। ओके, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, the head will be very like skin color, okay, dark skin color, or you can say a very light brown color, very light brown color. And these snakes are very huge and very fat. Okay, अगेन अ नॉन वेनेमस स्पीशीज, जहरीला सांप नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली काटता है, बहुत बेकार काटता है, बहुत बेकार काटता है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग ने अगर देखा तो आप लोग पकड़ने जाओ, नहीं, बहुत गंदा काटता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। और कभी कभार अगर उसने काटा और अगर आपने खींचने की कोशिश की तो ये पूरा पार्ट फट के निकलेगा, जहाँ पर भी वो काटना पूरा फट जाएगा, लाइक टाँके लेने की जगह नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो, उतना बेकार होता है। और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? मेरा favorite snake है. I love that. So I There is know something in the that chat box. eat male then they pregnant. Is it true? No, it's all false. ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। ये जो आपने बोला है कि python snakes, नहीं, this happens in insects. There are few insects जो mating के बाद मेल को खा जाती है। There are Yeah, few insects. sir. Which one? I'm not sure, but ये snake insects के साथ होता है। ये मैंने पढ़ा था कहाँ पर, तो बहुत साल पहले, तो इसके लिए मुझे याद नहीं है। Some spider. स्पाइडर्स में भी होता है, और स्पाइडर्स में, हाँ स्पाइडर्स में भी होता है, और Not मोस्टली in the snakes, रेगुलर। right? सॉरी, Snakes में नहीं होता ना? नहीं, स्नेक में ये नहीं होता। ओके, सो कमिंग ऑन द So, नेक्स्ट प्लीज। So what do they eat? पाइथन्स, दे ईट डॉग्स, दे ईट कैट, और दे ईट रैट्स, दे ईट पेग्स, लाइक जो भी जानवर इनके सामने आया छोटा, दे विल ईट इट। Pythons cannot eat a human, okay? They cannot eat a human because हमारे जो shoulders होता है वो बहुत broad होता है। अगर आप आपका face देखोगे तो ये पतला है, right? Comparatively to shoulders, so they can eat you up till here, but ये आपको नहीं swallow कर सकता है, okay? और अगर आपको अगर कोई पाइथन पकड़ लेता है तो it's very difficult, but it's very easy इसको छुड़ाना है। Obviously आपको झटका तो देना, वो तो भाग जाएगा, वो थोड़ी आपको लपटता रहेगा।
दे बिलोंग टू बोआ कंस्ट्रक्टर स्पीशीज, दैट मींस वो अपने शिकार को घूट के मारते हैं, ओके। यस, झाड़ पे कूद के ऐसा करते हैं ना। नहीं वैसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता। व्हाट हैपेंस इज जब भी उन्होंने कोई शिकार पकड़ा, ओके, समझो दिस इज अ रैट एंड दिस इज अ पाइथन, सब पकड़ा, तो ये क्या करेंगे ना कि नॉट ओनली दिस बट ऑल द स्पीशीज आई टेल यू, ये लोग पकड़े एंड दे स्टार्ट रोलिंग अप देयर बॉडी, they'll total coil up। जैसे सांप, जो भी उसका शिकार होगा, जो भी उसका प्रे होगा, जैसे वो सांस लेता है, सांस अंदर लिया, सांस बाहर छोड़ा, स्पेस जमा हुआ, स्पेस हुआ, ही विल स्क्वीज, सांस अंदर लिया, सांस छोड़ा, स्पेस गया बाहर, स्क्वीज। तो जैसे जैसा वो सांस बाहर छोड़ेगा अपना शिकार, वैसा वैसा वो और टाइट करता जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आता है जब वो शिकार सांस नहीं ले पाता, ठीक है, and then he will be like he'll just break his brain bones and all and then squeeze him till the time he don't die और ये मर गया, and then he'll start eating। So the longest python you rescued? Yeah, how long it was? Yeah. I'll show you just a minute। इनकी मेरे सामने एक फोटो पड़ी है, एक सेकंड। So if you see last year and 2000, not last year, 2019, I had 3 python rescued within 24 hours, and it was in DKC Kalanagar। The first python you see over here, I guess you can see, यहाँ से चालू हो रहा है यहाँ तक है, it is 14 feet long। It's a 14 feet long female, and within the 24 hours of that rescue, I rescued more 2 males because जब मैंने फीमेल को रेस्क्यू किया था, she was ready to mate and she already left the pheromone। pheromones are sex gland जिसके थ्रू दूसरा मेल अट्रैक्ट होता है, ठीक है, या दूसरे फीमेल से अट्रैक्ट होता है। सो 24 आवर्स के अंदर वही सेम लोकेशन पे मेरे को और 2 पाइथन्स मिला था which were males। I guess, yeah, tell me। In python, the males are bigger or the females? Females are bigger। Okay. And Because जो मेरा मेल पाइथन था ना, मेरे जो दूसरे 2 मेल पाइथन थे, one of the male python was 7 feet long, the second was 9 feet long, and the female was 14 feet long। Okay, next, anything else? no. Okay, so now this snake, okay, it's a very beautiful snake, very slow moving snake। it's a red giant boa। आप लोग ने सुना होगा मांडुल, 2 मुंडे वाला सांप, ऐसा करके कुछ सुना होगा, मांडुल मांडुल करके सुना होगा, फिर 2 मुंडे वाला सांप करके सुना होगा, सुना है आप लोग ने कभी? Yes। यस Okay, so सर। that is a snake, a well-known snake for black magic। Okay, इंडिया में इसके ऊपर black magic होता है, अंधविश्वास बहुत है सांपों के बारे में। But do they really have to बट ऐसा touch? कुछ नहीं होता, ब्लैक मैजिक एंड ऑल कुछ नहीं होता। लोग बोलते हैं 5 करोड़ का बिकता है, अगर ऐसा होता तो मैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, इट्स ऑल फेक, इट्स ऑल फेक। आई पर्सनली डू रेड्स ऑन इट, ओके। मेरे को अगर कोई बेच रहा है, कोई पकड़ा है किसी ने, I get calls। I have been with forest department, I have personally got so many people who are doing illegal trades of this animal and they are behind the bars now, okay। So red sand boas, a very beautiful snake, a very calm snake, okay। their entire life is just under the land, okay। the quantity of the snake is very good in nature, but what happens is ये लोग पूरा जमीन के अंदर रहता है, ठीक है, बहुत सुस्ती सादा, बहुत सुस्ती, जैसा मैं हूँ, बहुत सुस्ती मैं भी कभी कभार। तो what happens is ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग अपना सिर्फ इतना सा हेड जमीन के बाहर रखेंगे, इतना सा, ओके, इतना सा पार्ट हेड का, और बाकी उनका पूरा पार्ट जमीन के अंदर होता है, ओके। अगर जो दूसरा आजू बाजू से शिकार जा रहा है, चूहा हो गया या कोई बर्ड हो गया, एनीथिंग लाइक दैट, ओके, सो व्हाट दे विल डू इज दे विल ग्रैब इट, तब जाके वो पकड़ेंगे इसे। वो कभी उसका पीछा करके कभी नहीं करेंगे। दे बिलोंग टू बोआ कंस्ट्रक्ट फैमिली, दैट मींस कुंडली मार के ही खाना है, मार के खाना है, ठीक है, जहरीला सांप नहीं है। The defense mechanism of this snake is, if you see the tail, okay, it's blunt, it looks like a head, लोग बोलते हैं कि 6 महीना आगे से चलता, 6 महीना पीछे चलता, ऐसा कुछ नहीं होता, 6 महीना आगे से 6 महीना पीछे नहीं होता। It's a tail, it's a head, okay। the tail looks like head,
द रीजन इज इट्स अ वेरी स्लो मूविंग एनिमल। ओके, जब कोई इसका शिकार, जो उसका कोई प्रेडेटर जो होता है, जो कोई ईगल हो गया, जो कोई दूसरा जानवर हो गया, ठीक है, इफ दे आर ट्राइंग टू बाइट हिम, इफ दे आर ट्राइंग टू किल हिम, सो व्हाट ही विल डू इज ही विल कॉइल अप हिज बॉडी, ओके, और अपना टेल है ना वो उसके सामने छोड़ देगा, और जैसे ही उसका शिकार उसके टेल पे मारना चालू करेगा तो ये आगे आगे मूव करना चालू करेगा, और वो उसको शिकार, जो शिकारी है इसका, उसको क्या लगेगा कि ये तो इसका हेड है, एंड ही विल लाइक ट्राई टू किल हिम, राइट, और ये आराम आराम से स्लोली मूव करता रहता है और एक खड्डे में घुस जाता है। सो दैट इज हाउ दे गेट शेप्ड। और मोस्टली जो भी हमें को वाइल्ड में मिलते हैं, उनके टेल पे हमेशा कुछ ना तो कुछ मार्क्स मिलता ही है, इंजरी मार्क्स 100%। दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, अगेन सब अंधविश्वास है कि ये करंट देता है और इट्स गेटिंग सोल्ड फॉर 5 lakhs और 10 lakhs और 5 crore समथिंग लाइक दैट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पीपल आर सो क्रूअल that they try to, like, I rescued a python just a month back in December. Python, उसका मुंह स्टिच किया गया था। Okay, this is the color which you see over there of the snake. It's very rare. Okay, ये hypomelanistic color है। That means it's a genetic disorder जिसमें वो थोड़ा सा light है, इतना light है। Mostly it's not that light. It's brown. It's dark brown, blackish brown. Okay. सेकेंड थिंग, जो मैंने पाइथन रेस्क्यू किया था, उसका मुंह सी दिया गया था, उसका टेल कट किया गया टू शो हिम लाइक अ रेड चैन बोआ, एंड पीपल आर अबाउट टू सेल इट, बट वी लकीली रेस्क्यूड इट। देयर इज अ बिग इशू विद दैट। देयर वर आर्टिकल्स ऑन न्यूज़पेपर एंड ऑल। सो इफ एनीवन, लाइक, अगर किसी को ये सांप दिखता है या अगर आप लोग को पता चलता है कि someone is trying to sell it, do call the cops, do call the cops, because they are the people who are going to call us. Do call the cops and don't let this happen. Change. Again, a very common snake, a common sand boa. That was red sand boa. This is a common sand boa. Both belong to the same species. And iska agar tail dekho, this is also known as rough scale boa, because iska jo tail hota है ना बहुत rough होता है, बहुत rough. Again, non-venomous species, boa family से belong करता है. You see the pattern. Head is grey in color, body is brown in color. A very सुस्तीखोर snake. Okay, शिकार का पीछा करके नहीं खाता, जो भी चूहा वगैरह जो भी वो खाएंगे, बॉडी पूरा जमीन के अंदर होता है, and only the head is out. कोई अगर शिकार आजू बाजू आ रहा है, will grab it. That's how they eat, that's how they hunt. Okay, that's why even I love them so much. I love these beautiful snakes. I don't know why. Change. Now coming to the big four. Okay, now this is the thing which you have to listen. Okay, I want everyone to pay attention. Because I'll tell you, India में more than 300 species of snakes we find. Okay, 300 से ज़्यादा species होते हैं इंडिया में जो मिलता है। आप लोगों को क्या लगता है कि कितने परसेंट सांप है जो जहरीले होंगे? पहली बात, जहरीले नहीं होते हैं। I'll tell you after that. सांप विषैले होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कितने परसेंट सांप विषैले होंगे? कितने परसेंट? How many snakes are venomous? What do you think? Come on, speak up, guys. Now 10 to 5. 10%. to come and talk to me about this, because this is definitely going to save your life one day if कभी सामना हुआ तो। Come on, speak up. 30, sir. 10 to 30. 40%. 10 to 5. Okay, I'll tell you. इंडिया में ऐसे बहुत 300 स्पीशीज के ऊपर मिलता है, और उसमें से सिर्फ 20% ऐसा स्नेक्स है जो वेनेमस है। Only 20%. That's it. Only 20%. Out of that 20%, okay, जो आधे से ज्यादा सांप है ना, वो आप लोग को मिलता है घने जंगलों में, जो जहरीले है, ठीक है, विषैले या वेनेमस। और जो दूसरे विषैले सांप है वो आप लोग को मिलता है डीप सी में। समुद्र वाले सांप बहुत विषैले होते हैं, ठीक है। तो कभी आप लोग अगर किसी बीच पे चले गए, जूह बीच पे चले गए, या मलाड साइड अगर आप मारवे साइड कहाँ पर चले गए, तो वहाँ पर जो मछुआरे होते हैं, दे ब्रिंग द नेट्स, ओके, समुद्र में से, और वो डायरेक्टली जाके बीच पे क्लीन करते हैं। तो उसमें बहुत सारी सी स्नेक्स मिलते हैं। नेवर ट्राई टू टच इट, नेवर एवर ट्राई टू टच इट, ओके, बिकॉज दोज आर हाईली वेनेमस एंड पीपल ओवर देयर दे जस्ट लाइक, उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उनको पता भी नहीं चलता कि वो क्या है, उनको पता नहीं आता।
Luckily, snakes don't bite it, but ठीक है. So coming on the point, आधा से ज़्यादा जो सांप है जहरीला वो मिलेंगे आपको घने जंगलों में, तो दूसरे मिलेंगे आपको घने डीप सी में. जो हमारे यहाँ पे लोकली मुंबई में कॉमनली मिलता है, those are only four. Only four. That's it. Only four. The first thing which you see over there, it's a cobra. Okay, it's an Indian spectacled cobra, scientific name Naza. And if you see, what do you think by spectacle? Can anyone speak? What do you mean by spectacle? Speak up, Why? speak up. Come on, guys, speak up. I want you to interact with me, please. What do you mean by spectacle? Glasses. That's perfect. That's perfect. Okay, so I'll tell you. If you see the first photo, can you see the spectacle? Can you see आंखों जैसा तो निशान है? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, Okay. sir. What happens is the snakes, okay, जो कोबराज होते हैं, अगर वो कहीं से चल रहे हैं, वो जा रहे हैं, ठीक है? And just a minute, my dog wants to come in. Just a minute. Come on, come. Yeah, it's okay, fine. Okay, so what happens is, हाँ, कोई अगर सांप कोई चल रहा है, कोबराज मोस्टली, ओके, अगर कोबरा कोई जा रहा है जंगल में अपने रास्ते पे, और जो दूसरे बर्ड्स होता है, जो शिकारी बर्ड्स होता है, जैसे ईगल हो गया, काइट हो गया, तो ये लोग डायरेक्टली आके इसको पकड़ सकते हैं, राइट? पकड़ सकते हैं हेड से या कहाँ से भी. सो इट इज हिज डिफेंस मैकेनिज्म, बिकॉज इसको पीछे का कुछ नहीं दिख रहा है, इसको सिर्फ आगे का दिख रहा है, तो इट इज हिज डिफेंस मैकेनिज्म. अगर इसको खतरा महसूस होता है ना, तो ये क्या करता है, चलते चलते भी अपना फन खोल देता है, चलते चलते भी. तो स्पेक्टेकल मार्क जो होता है, वो दूर से जो पंछी होते हैं उन लोगों को दिखता है कि अरे ये तो मेरे को देख रहा है, ये मुझे काट लेगा. ओके, सो फिर वो वैसे नहीं आता उसको पकड़ने के लिए. सो दैट इज व्हेन दे गेट सेव्ड. ओके, व्हेन वी कम इन फ्रंट ऑफ देम, okay, what they will do is they will open their hood, they will show them as bigger as they can, and they will be like, okay, stay away from me, trust me, guys. If you see the snake, respect him so much. I respect the snake so much because they are so sensible snakes. They are so sensible, highly venomous snake. Okay, hard to identify. You will see the spectacles mark on the neck, okay, from behind, and it has a hood. Obviously नाक देख के कोई भी पहचान सकता है, ठीक है? और अगर बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि like, you know, when you see the snake, so till the time he is not frightened, he is not scared, he won't open his spectacle mark. Okay, तो वो टाइम पे खाली इतना डरना है कि इसके आँख के नीचे से एक लाइन जाती है बस, ठीक है? सेकंड थिंग, आप लोगों को इसके बॉडी पे ना, नेक पे, यहाँ से लेके बैक तक थोड़ा सा इतने बैच में आप लोग को मार्क दिख ही जाएगा, स्पेक्टेकल मार्क जो बंद होगा. Okay, skin is very smooth, very beautiful snake again, and eyes are big, round eyes, not vertical pupil, no. And yeah, one of the big four will go on the second one. So what is difference between the spectacle snakes and king cobra? King cobra, first of all, a spectacle mark, both are different snake. King cobra is totally different, and cobra is totally different. Spectacle cobra is totally different. Spectacle cobra may go up to maximum 7 feet. वो भी बहुत रेयर केसेस में, हाँ. और अगर आप लोगों ने कभी आपके एरिया में सुना होगा कि एरिया का नाग है, या फिर जगह वाला है, या फिर आपने ये भी सुना होगा कि बहुत टाइम से यहाँ पर एक सांप है, बहुत टाइम से, बचपन से. So this is the snake. Mostly cobras क्या होता है ना कि cobras are very dominant with the places, and cobras are very dominant snake. वो दूसरे सांपों को भी अपने एरिया में जल्दी आना अलाउड नहीं करते, दूसरे cobras को mostly. Okay, and they don't leave the area. वो अपना एरिया छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाते. तो and cobras का एज क्या होता है पता है? Anyone can guess? Anyone who can guess cobras कितने साल तक जीता? 100 साल वाला, वो फिर इच्छाधारी वाला, वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है? Anyone guess क्या एज होगा? 3 to 4 years. No. The 10.
20%. 3 to 4. You can add one more in that. 35. 5. 35. 35. Yeah, cobras live up to 35 years. अब पता नहीं मैंने कितने रेस्क्यू किए रहेंगे जो मेरे से भी बड़े होंगे, भरोसा नहीं. Okay, so cobras are very dominant with their places. They don't leave that place. Okay, वो अपने एरिया छोड़ के कभी नहीं जाते हैं. It's very rare conditions that they go just for hunt. That's it. And if by any chance they are in your area और आपका उनसे encounter हो जाता है, snakes are never going to come and bite you. Okay, snakes are never going to come and bite you directly. वो आपको चेतावनी देंगे. If you stand still, if you maintain your safe distance, they will pass away. Snakes are just defensive animals. Just you have to keep this in your mind, okay? Snakes are only a defensive animal. They are not aggressive at all, okay? तो अगर आप उनको कुछ नहीं करोगे तो वो आपको डेफिनेटली कुछ नहीं करेंगे, okay? So what do they eat? What do they eat? They eat rats, they eat lizards, and मैंने एक कोबरा को एक कुत्ते का बच्चा भी खाते हुए देखा है. Yeah, it's a bitter truth, but yeah मैंने देखा है. It's nature, right? अगर मैं ये सोचूंगा कि कुत्ता खा रहा है वो, ठीक है, बेचारा कुत्ता मर रहा है, अगर मैं ये सोचूंगा तो फिर ये कौन सोचेगा कि अगर वो सांप वो खाएगा नहीं तो वो सर्वाइव कैसे करेगा, राइट? इट्स अ बेटर ट्रू, इट्स नेचर. और नेचर का एक रूल है, किल टू ईट. सो इवन मैं भी जो जानवर मारता हूँ मैं सब खाता हूँ. या आई लव चिकन. लेट्स गो नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट नेक्स्ट. Sir, some people eats the snakes. It's true? या मेरे को भी एक बार ट्राई करना है. आई गो इंडोनेशिया एंड डेफिनेटली आई ट्राई वंस. एक्चुअली मेरे भाई ने खाया है, ऐसा वो बोल रहा है, पर कितना ट्रू है क्या मालूम है कैंपिंग में. Okay, and king cobra, I forgot to tell about the king cobra. First of all, king cobra is not a species which comes under cobras. King cobra एक खुद का अलग species है. वो cobra के species में नहीं आता. Cobra के species में नहीं आता. Every cobra species, अगर उसका scientific name आप देखोगे तो वो नाजा से चालू होता है. NAJA. नाजा कौतिया, नाजा फिर नाजा, जो भी सब जो भी कोबरा के स्पीशीज है सब नाजा से चालू होता है. बट किंग कोबरा का जो साइंटिफिक नेम है वो चालू होता है ओसियोफेगस हैनाना. इट इज द ओनली स्नेक व्हिच हैज ओसियोफेगस. ओके, सो सी टू इट दैट कोबरा एंड किंग कोबरा बोथ आर डिफरेंट स्पीशीज. किंग कोबरा अभी हमारा एक्चुअली एक प्रोजेक्ट चल रहा है इन रत्नागिरी, ओके, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट. तो वहां पर हमारा किंग कोबरा के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है. एंड we recently rescued 3 king cobras in past 3 months, and the size was up to like एक king cobra का size था 12 feet, एक का 14 feet और एक का था 18 feet. That was the size like which we have rescued over there. And there is a very beautiful animals, king cobras, or I call him majesty. I call him majesty because वो एक अलग सांप है बहुत. The more you respect him, the more he respects you and he won't do anything to you. नहीं तो फिर किंग कोबरा एक ऐसा सांप है कि आप अगर आप टेल पे भी टच करते हो ना उसके, वो चाहे कितना भी बड़ा सांप हो, कितना भी बड़ा 16 फीट 12 फीट कितना भी बड़ा, जैसे आप टेल पे टच करते हो ना उसके, ये ऐसा मुंह खोल के सामने आता है और लिटरली फेस पे आता है. और उसका हाइट, कोबरास अगर यहाँ से चालू होता है तो कोबरास इतने मैक्स होते हैं, बट किंग कोबरा जमीन से चालू होगा तो इतना आएगा, इतना लिटरली इतना मेरे सामने आया है ऐसे मुंह खोल गया, लाइक लिटरली मुंह खोल गया था. दोज आर वेरी ब्यूटीफुल. वो एक अलग सांप है, बहुत अलग सांप है. Coming to the next snake, which is crate, a common crate, and it is a very common species in Mumbai, a highly venomous species. और अगर आप लोग को ये सांप आपके घर के आजू बाजू में दिखता है तो that means see to it, you keep this in your mind that you have to take care of you very much. आप लोग को रात के टाइम आप जब भी जा रहे हो तो आप लोग को टॉर्च लेकर निकलना है. वेयर योर शूज, वेयर योर प्रॉपर थिंग, बिकॉज क्रेट्स मोस्टली फीड ऑन venomous species. ओके, क्रेट दूसरे सांपों पर ज्यादा सर्वाइव करता है, और वो भी कौन से है? I have seen crate eating cobras. I have seen crate eating Russell's viper. Okay, क्रेट ज्यादा करके venomous species पे सर्वाइव करता है, दूसरे जहरीले सांपों पर सर्वाइव करता है. ओके, it's a highly venomous snake. It is 8 times more potential than cobra. इसका जो venom content है वो 8 से 10 गुना ज्यादा जहरीला है कोबरा से. Okay,
and it is a black color snake which has white bands on it. People get confused between great and wolf snake, if you remember. Okay, I told you about great and wolf snake, right? So people get confused between, because even wolf snake have bands, great also has bands. Even great you get that small size, even wolf snake you get small size. And greats are, ये एक अलग साहब है, इसका मैं बिहेवियर आज तक कभी समझ नहीं पाया, आज तक कभी समझ नहीं पाया। मैं दूसरे साहबों को बिहेवियर बहुत इजीली समझ पाता हूँ, बट क्रेट का मेरे को बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं क्यों। दे आर वेरी लेस एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम। अगर दिन के टाइम पे आपको कभी मिल भी जाए तो दे विल बी लाइक जस्ट ट्राई टू रन और हाइड, दैट्स इट। इतना एक्टिव बिल्कुल नहीं रहेंगे, बट अगर वही रात के टाइम पे अगर हम लोग को रेस्क्यू होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस समटाइम्स, बिकॉज दे आर नेवर काम, दे आर ऑलवेज सुपर एक्टिव, दैट्स इट। How to identify a black color snake with white bands on it, okay? And bands इसके गले से चालू नहीं होते हैं, इसके मिड बॉडी से बैंड चालू होते हैं। अगर आप फर्स्ट फोटो में आपको देखोगे तो मिड बॉडी से इसके मेन प्रॉपर बैंड चालू हुए हैं, हेड से नहीं हुए। और वुल्फ स्नेक को गले के यहाँ पर फर्स्ट बैंड होता है। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन मार्क इज, अगर आप इसका इतना क्लीन नहीं बता सकता मैं, बिकॉज यू हैव टू सी द स्नेक वेरी प्रॉपरली। जो इसके पीठ के ऊपर के जो स्केल्स होते हैं एकदम टॉप के, वो हेक्सागोनल होते हैं, ओके? दोज आर हेक्सागोनल स्केल्स। एंड अगेन अ हाईली वेनमस स्नेक, तो इससे बच के रहना, ऐसा बहुत बच के रहना। अगर आप लोगों ने सुना होगा सूर्यकांत करके कुछ तो ऐसा नाम है जो गाँव साइड बोलता है, एंड आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि रात को काटता है तो दूसरे दिन इंसान सूरज नहीं देखता। So this is a snake because it's a highly venomous snake। और रात के टाइम पे गांव में क्या होता है ना कि लोग बाहर सो जाते हैं अपने ग्राउंड वाउंड में और घर के बाहर, तो and they don't take proper care of themselves। तो if this snake goes inside, okay, आजू बाजू घूम रहा है और अगर इंसान मूव होता है तो ये ऑब्वियसली बाइट करता है, डर के हमारे डिफेंस कर गया। और being it so highly venomous, इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके जो दांत होते हैं वेनम के, वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे होते हैं। आपको फील भी नहीं होगा कि इसने आपको बाइट किया है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसने आपको बाइट किया है, खून भी नहीं निकलता, बट वेनम ऑलरेडी आपके अंदर चले जाता है। तो लोगों को पता नहीं चलता कि किसी सांप ने काटा है, एंड अनलकीली दे डाई। समटाइम्स पीपल गेट सिम्टम्स लाइक उनका पेट दुखना चालू होता है, स्टार्ट होता है पेट दुखने से। ओके, आई हैव रेड दिस आर्टिकल कि मोस्टली क्या सिम्टम्स आते हैं लोगों को बाइट के बाद जो सर्वाइव किया है। सो स्टार्ट होता है पेट दर्द से, उल्टी, वॉमिटिंग, द प्यूक, एंड these are main symptoms when they go to the hospital, and then they got to know when the blood test is done that there is a snake bite। और जो भी बीच में सलमान खान को बाइट होता है, any idea what kind of snake it will be? Salman Khan was comparing that snake with crate, but I'm damn sure, मैंने साफ देखा नहीं है, मैंने फोटो भी नहीं देखा, but I'm damn sure that it may be a wolf snake। Okay, because people over there, they were comparing the snake with a crate, and the only snake which can be compared to crate is a wolf snake। And if he survived, if he was not there in the hospital for more than 12 hours, that means it was a non-invasive species। नहीं तो अगर एक सांप काटता है तो आपको मिनिमम 24 आवर्स आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। Next up, next slide, please। Yeah, please tell me. Speak up। Anyone saying anything? किसी को कुछ बोलना तो बोल सकता है, obviously। कोई कुछ बोलना चाहता है? No, sir. Okay, so coming on the third snake, which is a Russell's viper, also known as a chain viper। Can you tell me why it can be also known as a chain viper? Anything, Patches are like chain. Yes, it's a highly venomous snake, a very highly venomous snake। और इंडिया में सबसे ज्यादा जान यही सांप लेता है। हर साल 2 से 3 हजार लोग मरते हैं मिनिमम इसके बाइट से। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, ये सांप को देख के आपको सबसे कंपैरेटिवली स्नेक कौन सा याद आता है कि आप कंपेयर कर सकते हैं? ऐसा कौन सा सांप है जो, राइट? You got it? Yes, sir. You give the answer. People think that is a python।
people think that it is a python. People go and try to catch it. What happens? लोगों ने पकड़ने की कोशिश किया, and as this is a very aggressive and defensive snake, so he will bite the person. उसको क्या लगेगा कि अरे मेरे को तो अजगर काटा, मेरे को कुछ नहीं होगा, कि अजगर तो काटा है. And this actually happened with many times. People, they go home, they sit behind, they relax, and what happens is उनका हाथ सूखना चालू होता है, जहाँ पर काटा वो सूखना चालू होता है. एंड जब तक वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो दो चीज होती है. एक, वो उतना पार्ट एम्प्यूटेट करना पड़ता, मतलब काटना पड़ता. दूसरा, वो मर जाता. Because it's their fault, right? People misunderstand the snake. Okay, they feel that it's a python. और अगर कोई भी snake bite होता है, and if you go to the hospital, you don't have to rush. You have to be calm. You have to control your feelings. You have to control your heartbeat. You just don't need to be getting scared. If you are scared, then डरोगे उतना कम टाइम बचेगा आपके पास. नहीं तो मिनिमम अगर पहुंच जाते हो 1 घंटे में बगैर हॉस्पिटल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिनिमम अगर 3 घंटे के अंदर आपके बॉडी में अगर एंटीवेनम के शॉट्स जाते हैं तो योर चांसेस इंक्रीजेस ऑफ सर्वाइविंग. ओके, तो या Russell's viper, highly venomous species. Okay, you saw the body, you saw the chain. I told you कि Russell's viper के जो बॉडी पे पैटर्न्स होते हैं वो इवन पैटर्न्स होते हैं, एक लाइन में होते हैं. कंपैरेटिव टू पाइथन नहीं, पाइथन के अनइवन पैटर्न्स होते हैं. And if you see the head, it's a triangle head. It's a triangle head. Okay. And the defense mechanism of the snake is, even he will give you चेतावनी. ये चेतावनी देता है. कैसे देता है? Whenever on the left hand side if you see the snake, okay, वो coil किया हुआ है. ये लोग coil कर देते हैं and they start hissing. अपने घर में जो कुकर की सीटी की आवाज होती है ना, exactly वैसा आवाज आता है और उतना ही loud कुकर का सीटी की आवाज जैसा आवाज करता है. इससे भी ज्यादा लाउड होता है साउंड इनका. ओके, अगर ऐसा आवाज कभी भी आता है आपका आजू बाजू, जस्ट डोंट ट्राई टू टच द स्नेक प्लीज. इसके स्ट्राइक लाइक बहुत लंबा, लाइक मोर लाइक ऑलमोस्ट 1/3 बॉडी ये अपना स्ट्राइक करता है. 1/3 बॉडी खाली इतने से टेल के पार्ट पे वो आप पूरा आपको आपके ऊपर जंप कर सकता है. सेकेंड थिंग, जब वो आता है तो ऐसा मुंह ऐसा प्यार से नहीं आता, वो इतना बड़ा मुंह खोल के आता है और इतने बड़े मुंह में इतने बड़े बड़े दांत होते हैं. लाइक दिस बैक ऐसे, लाइक ऐसा आता है सीधा. नेवर ट्राई टू टच अ स्नेक. ये तो गलती भी मत सोचना कि इट्स अ पाइथन. नेवर डू इट. ओके, कमिंग ऑन द लास्ट स्नेक. सर व्हिच वन इज द मतलब जो टेल से आवाज निकालता है? इट्स अ rattlesnake which is not found in India. ओके सर. So again, this is very good. I love the snake, and people compare it with cat snakes sometimes. Okay, it's a saw-scaled viper. And I'll tell you what happens. सांप का साइज दिख रहा है बाजू में, लेफ्ट वाले फोटो में, दो पत्थरों के बीच में दिख रहा है. Yes. सांप होता है इतने से मैक्स इतना. इससे बड़ा मैंने आज तक कभी सोशल वेब पर देखा नहीं. एंड ये बहुत रेयर कंडीशंस में. When I was pursuing my merchant navy studies and I was in hostel, तो हमारे हॉस्टल में बहुत saw-scale vipers होते थे, बहुत मिलते थे मुझे. और क्या साइज होते थे? इतने से. So what happens is saw-scale actually बहुत venomous species है, but उसके डेथ रिकॉर्ड्स इतने कभी हो जाते हैं, गांव साइड में होता है. मुंबई जैसे सिटी में नहीं होते. मुंबई में बहुत मिलते हैं saw-scale viper. तो क्या होता है ना कि घास जब काटते हैं लोग तो ये घास में बैठे होते हैं कोने काने में, एंड पीपल लाइक दे जस्ट ट्राई टू कट इट, लाइक पकड़ते हैं और काटते घास, और ये सामने काफी बड़ा बैठा होता है और इसके ऊपर हाथ पकड़ लेता है, ये बाइट इट. फिर कोई बच्चा खेल रहा है, बॉल लेने के लिए गया घास में, वो मैंने पकड़ लिया, सांप के पास बॉल है, वो ऑलरेडी स्केट है, वो ऑलरेडी डिफेंसिव है, जैसे पकड़ा वैसे बाइट. और इनका स्ट्राइक 1 सेकंड में 4 बार स्ट्राइक कर सकते हैं. 1 सेकंड में 4 बार स्ट्राइक कर सकते हैं, मुंह खोल के. इतना सा सांप है उसमें भी वो 4 बार स्ट्राइक कर सकते हैं 1 सेकंड में. दे आर वेरी क्विक, दे आर वेरी फास्ट. ओके,
how to identify it. You saw the pattern. Okay, now coming on the point of his head. Look at his head. Okay, can you see arrow mark or not? I cannot tell you arrow mark. त्रिशूल जैसा थ्री ऐसा ऊपर की तरफ तीन लाइन दिख रहा है. Yes. And I told you about a cat snake, a non-venomous, a semi-venomous species. So what was the mark on his face, on his head? Even he has cat eyes because he's a nocturnal The species. V type. It was a Y, and this has Trishul. There's a three marks. Okay, so this is a non-venomous, highly venomous species. सॉच के लिए तो अगर ऐसा कुछ मार्क दिखता है तो just stay away, stay away, stay away. बस. Next slide. So baby size क्या होगा उसका? Baby size. This much. This much. And I'll tell you about Sosh के viper. Sosh के viper directly give babies to, okay, वो directly बच्चे देता है, अंडे नहीं देता. Russell's viper बच्चे देता है. Crate अंडे देता है. Cobras अंडे देते हैं. Okay, but Russell's viper directly बच्चे देता है. Sosh के viper बच्चे देता है. Sand boas directly बच्चे देते हैं. They don't give eggs. Wine snakes they directly give birth. Cat snake they directly give birth. Okay. Rest of the snakes, they give eggs. They lay eggs. Okay, sir. So, the first photo, which is the first photo on the left top, can anyone identify it? Common crate. Common crate. That's so perfect. What is the right one on the top? Yeah, that one. Russell's viper. That's so Russell's perfect. viper. Left one bottom. Spectacles. Speckled cobra. That's right. And which is the last one? Saucer viper. Sawtail viper. Sauce scale viper. Okay, go on the next slide. Now, up maza aayega. So this is a bamboo pit viper. You get the snake in Mumbai, somewhere in RA colony or Andheri east side में ज़्यादा करके मिलता है. Andheri east to Mulund side, Thane side ये सब थोड़ा मिलता है. But बाकी अगर आप जाओगे पाटरा side तो यह उतना वहाँ पर नहीं मिलता. And second thing is, it's a highly venomous snake. But अभी तक का जो इसका death record है, एक ही death record है, एक ही death record है, एक या दो. और वो भी वेरी रेयर केसेस. मोस्टली क्या होता है कि बैम्बू पिट वाइपर्स दे हैव टू हाइड ऑन द ट्री. दे आर लाइक शिकार के लिए बैठे रहते हैं. ये इतना शिकार ढूंढते नहीं है. तो क्या होता है कि कोई शिकार आया तो पकड़. तो इन्होंने अपना वेनम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया. मुझे ऐसा लगता है. आई पर्सनली फील इट दैट दे डिडंट मेक द वेनम दैट स्ट्रॉन्ग, द पोटेंशियल दैट स्ट्रॉन्ग कि उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी. तो दैट केसेस फॉर ह्यूमंस इट्स वेरी लेस. अभी तक सिर्फ एक है और वो भी रेयर कंडीशंस. नेक्स्ट, हाईली वेनेमस स्नेक. You may find it definitely in Mathiran. Okay, Mathiran में बहुत मिलता है. But snake is So why the bamboo? Bamboo ऐसा नाम क्यों दिया है उसको? bamboo pet viper. Yeah. Guess it. Rat snake. नहीं bamboo pet viper क्यों दिया है? Guess it. Why? It is green. बाम्बू पे होता है. ज्यादा करके बैम्बू ट्रीज पे मिलते हैं. बट अभी बैम्बू ट्रीज तो नहीं है. बट ये लोग अपने नेचुरल हैबिटेट दे हैव चेंज्ड इट टू नॉर्मल ट्रीज आल्सो. Change it. Which snake? Snake. Red snake. Red snake. What if I say this is not a rat snake? Come on. What happened? What if this is not a rat snake? What will you say? Will you go against me and say that it is a rat snake, or you'll be like, no, sir, it's not a rat snake. You're right. Sir, it is a red snake. It is a red snake. That's good. Okay. Next slide, please. Go for the next slide. What do you think about this snake? Black cat snake. Go now. It's not a cat snake. बिल्ली वाले सांप नहीं है ये. Go for it. Give your best try. See for the identification marks. What I said you. Go for it. Black rat snake. Black?
Speak. I guess you are right. Black rat snake. Anyone else? Anyone else? Come on, try. Give your best try. Come on, guys, give your best shot. बोलो. आप लोगों को जो लगता है वो बोलो. Okay, if you are wrong, I am there to correct you, right? जो लगता है आप लोगों को बोलो. Come on. Speak up. Sorry. Black cobra. Okay, so it is a black rat snake. No, not python. It's rat snake. It's a rat snake which is black in color. It's a hypomelistic color. Okay, hypomelistic means it's a genetic disorder in which the species become black. Okay, and if you see this snake, ये ज़्यादा करके आपको जंगलों में मिलेंगे. ये आपको cities में नहीं मिलेंगे. The color of the snake, the morph of the snake actually depends a lot on the geographical condition of that area. अगर आपके एरिया में ज्यादा झाड़ है या ज्यादा शैडो रहता है तो वहां पे आपको जो स्नेक्स मिलेंगे वो बहुत लाइट मिलेंगे, लाइट कलर में. ओके, और नहीं सॉरी डार्क मिलेंगे. ठीक है, बिकॉज उनको धूप चाहिए होती है. स्नेक्स नीड सन बास्किंग. ओके, बिकॉज ये ठंडे खून वाले जानवर, उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको मूवमेंट के लिए दे नीड सन बास्किंग, दे नीड धूप. ओके, सो जरा सा भी धूप मिले एंड उसके लिए उनका बॉडी हीट अप हो जाना चाहिए. इसके लिए उनका कलर डार्क हो जाता है इन जंगल, इन शेडी एरियाज एंड कंपैरेटिवली टू द स्नेक्स व्हिच वी गेट. तो आप लोगों ने जो पहले वाला रैट स्नेक मिला था, देखा था येलो कलर में, तो दैट इज वेरी ब्राइट कलर, राइट? सो Yes, sir. आप लोगों को ये लॉजिक तो पता है कि जो डार्क कलर होता है वो धूप एब्जॉर्ब करता है, जो लाइट कलर होता है वो धूप एब्जॉर्ब नहीं करता जितना Yes, sir. डार्क करता है. या सो दैट डिपेंड्स अ लॉट इन स्नेक. वो स्नेक्स में बहुत होता है कम. जब कोई सांप जंगलों में है तो उसका कलर बहुत डार्क होता है, क्योंकि जंगल घने होते हैं और उनको धूप नहीं मिलती होती जितनी चाहिए होती है. तो ये ज्यादा करके जंगलों में मिलता है. सेकेंड, और शेडी एरियाज में मिलता है. लेफ्ट वाला सांप कौन सा? रसल वाइपर. Okay, that was quick. And which is on the right one? Sand boa. Okay, I guess you are the only person. Your name is Dipali Tiwari, right? Yes, sir. Yeah, I guess you are the only person who paid attention. Now, can you tell me which snake is which one? Cat. Cat. Snake. And on the right? snake. Cat. Both were the cat snake. Short Both are scaled cat. Are viper. you sure? Are you damn sure about it? Yes, Short both are scaled cat viper. snakes. Yes, sir. Okay, so on the Yes, left sir. side, it's a cat snake, and on the right side, it's a soft shell viper. Yes. Saw that? How you got tricked? I said you about a line which you cat snake has. Change. Now tell me, which one is on the left and which one is on the right? Go for the right one first. Right is cat snake. Cat snake. Oh. And what is the identification mark? You will tell me that it is a rat. It's a cat snake. What is the main Why? identification mark? Why mark on And his on the right, which is on the left one? Saw scaled viper. That's Soft perfect. scale. What is the identification mark? Main identification mark. Arrow Which? mark. Arrow mark. Tool mark. 3 marks. Three mark. Whatever. Next slide. Now. This is Right. something. Common Maza. trait. Common trait. Which is common Common grade. grade. और यहाँ पे you know there are some photos in which वो danger वाला sign दिख रहा है. It has been tricked. First one is the common trait. How do you Left know one is what is common a trait. common trait? Because the sign starts from half of the body, not from the neck. Oh my god, I'm proud of myself. You paid so much attention. I'm very happy for that. And the right one? Can anyone tell me the snake about which is on the right? Hello, I cannot hear you guys. Network issue हो गया क्या? Hello. Can anyone speak? Bull snake. Sorry? Checkered back.
chicken to kill back. No, you're not wrong, right? You're Wolf totally snake. wrong. It's a wolf snake. Yeah, definitely, it's a wolf snake. It's a wolf snake. How do you know it's a wolf snake? Can you tell me? Marking is from the neck. Brown color. Brown color snake. You get crates also in the brown color. So the The marking pattern starts is from the from head. Yeah, triangular head. Okay, with flat head, and the band starts from the neck. Comparatively to crate. No. Next, let's let's talk about myths. Now it's gonna fun. It's gonna be fun. I have only 5 minutes. I have to push. Okay. So what do you think? All snakes are poisonous or snakes are venomous? Venomous. Yeah. What is the difference between a poison and a venom? Venom. Can anyone tell? Anyone? Kuch bhi. Give your best shot. Give your best shot. Try it. Come on, speak up. Speak up. What is the difference between a poison and a venom? You got 3 Poison is seconds. poison. ingested. Yeah. Poison is ingested and venom is infected. Sound. Okay, I'll tell you. Poison, if you eat poison, you're directly going to come in contact with it. Okay, it is going to affect you. If it is on your skin, it is going to affect you. Okay, but this is not the case with venom. Okay, venom only if it goes in your bloodstream, that is the only time when it is going to affect you. It's a high concentrated protein that your body cannot digest. Okay, so see this in your mind, keep this in your mind. Venom, अगर हमने सांप का जहर पी भी लिया, nothing is going to happen. इसका ये मतलब नहीं हमें पीना चाहिए सांप का जहर. ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, because we brush daily, we get minor injuries in our gums, and through our gums the venom can go inside our blood vein, and that is a snake bite then. Okay, so we should never try to it. But if it directly goes inside your tummy, it is definitely going to get digested. If it is there on your skin, nothing is going to happen. But at the same time, if you have any marks on your skin, like marks in the sense any injury on your skin, a fresh wound, okay, और अगर उसके ऊपर अगर venom गिरता है, तो it is definitely going to affect you, but it is going to mix with your blood. So anything which start with mixing in your blood, that is definitely going to affect you. Okay, that is called venom. Okay, when it affects you when it goes in your blood. And a snake with 2 mouths of 5 heads. Huh? I heard there are snakes तो जिससे नशा होता है मतलब मेरे एक दोस्त ने बताया था नशा ऐसा कुछ नहीं मुझे होता. It's all fake. It's all fake. It's all fake. ऐसा कुछ नहीं होता. क्या? ऐसा कुछ नहीं होता. So it's all fake. So chill. मैंने आज तक ऐसा कोई सांप नहीं देखा जिससे कुछ नशा होता. No, there is no snake जिससे नशा होता है. कुछ नहीं. It's all fake. Okay, सांप के I'll tell you, अगर सांप जहरीला सांप है और वो टंग वंग पे काटता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो I'll tell you, अगर टंग पे कुछ जहरीला सांप काटे तो ऑब्वियसली इंसान मरेगा. He won't survive. He won't survive. He cannot survive. Okay, and if it is a non-venomous snake, तो obviously इंसान को फर्क क्यों पड़ेगा, right? Coming on the third point, which is snakes with 2 mouths or 5 heads. ऐसा होता है? ऐसा 2 मुंडे अलग अलग होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता. It's all fake. ठीक है? It's all fake. ऐसा कुछ नहीं होता. हाँ, but साइंटिफिकली अगर आप कभी देखोगे तो एक वेरी रेयर कंडीशंस में देयर इज समथिंग कॉल्ड, देयर इज अ पर्टिकुलर वर्ड फॉर इट, जहाँ पे एक सांप का एक बॉडी है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल स्ट्रेट बॉडी. ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक हेड है, यहाँ पर एक हेड, ऐसा नहीं. नॉर्मल बॉडी है एंड इट हैज अ हेड लाइक दिस. एक यहाँ पर हेड निकल रहा है, एक यहाँ पर हेड निकल रहा है. सो दैट इज वेरी रेयर केसेस, दैट इज वेरी रेयर. ओके, वैसा. और बट 2 अलग अलग मुंडी, टेल के यहाँ पर मुंडी है, वैसा कभी कुछ नहीं होता. ओके, क्या लगता है इन सांप इंसानों को खा सकते हैं? No. no Why? Yes, anaconda can swallow. Anaconda max up to 30 feet, and if okay, the green anacondas they go up to max 30 feet, and a yellow anaconda they go up to max 12 feet, 12 to 15 feet. I had a pair of yellow anacondas when I was in Mumbai. I'm in Delhi right now. So जब मैं मुंबई में था तो I had a pair of yellow anacondas as my pet, and they were almost the female was almost 12 feet and the male was almost 9 feet. So but I gifted it to my friend when I was coming for my work. So yeah, the anacondas are very beautiful, by the way, very beautiful. I love them. So anacondas cannot
eat a human. They can kill a human by squeezing it, but they cannot eat a human, because to eat a human, a snake at least need to be more than 30 feet, because of our shoulders. उतना उसका ब्रॉड ओपन होना चाहिए मुंह, ठीक है। जो आप लोग मूवीज में देखते हो वैसे एनाकोंडास बिल्कुल नहीं होता है, वैसे बिल्कुल नहीं होता। इतने ह्यूज, इतने ज्यादा होते तो आज इंसानों का पॉपुलेशन कम होता। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, स्नेक्स ड्रिंक मिल्क? क्या लगता है? No. No. ओके, व्हाई नो? They cannot digest it. व्हाई दे कांट डाइजेस्ट इट? बताओ 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 बताओ, व्हाई दे कांट डाइजेस्ट इट? Heart rhythms के लिए। Okay, each and every animal who gives milk, okay, we human, we produce milk, okay, so we got lactic acid in our stomach, and through, with the help of lactic acid only, you can digest a milk. Snake don't have lactic acid, they cannot digest a milk. Agar wo, these are reptiles, if they drink milk, they are definitely going to die. What happens during the Nag Panchami is snakes are caught a month before, okay, वो भूखे रहते हैं, वो लाइक उनको कुछ खाना नहीं दिया जाता, उनको पानी नहीं दिया जाता, कुछ नहीं, ओके। और हमारे इंडिया, दिस इज इंडिया, सो यू नो करप्शन तो सब बच है। मिलावट तो सब बच होती है। तो जो दूध होता है, दूध उसके अंदर पानी डाला जाता है, ठीक है, एंड वो जब सांप को दिया जाता है तो सांप दूध के अंदर जो पानी के एसेंस होता है वो स्मेल करके, वो सेंस करके वो पीता है, उसको लगता है कि वो पानी पी रहा है, बट ही ड्रिंक्स एक्चुअली मिल्क। ओके, and after 1 or 2 days he eventually dies, because वो जो दूध है उसे जब पेट में चले जाता है तो वो अंदर ही अंदर सड़ना चालू होता है, खराब होना चालू होता है, और सांप भी अंदर अंदर से खराब होना चालू होता है, सड़ना चालू हो जाता है, बिकॉज वो खाना अंदर उसका सड़ रहा है। एंड उसको तो दर्द और मालूम पड़ता है, बट he cannot go to the doctor, right? And snake eventually die. Do you think about नागमणि and cobras? ऐसा कुछ कुछ कोई है नागमणि वाला, इच्छाधारी नागिन, ऐसा कुछ कुछ? No. Anyone? No, sir. No. It's all fake. It's all fake. It's all fake. नागमणि कुछ नहीं होता, इच्छाधारी नाग कुछ नहीं होता, ठीक है। Snakes take revenge? No, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। Snakes don't take revenge. They don't have membrane in their brain. Membrane is a part of brain through which you can keep memories, in which you get which you store memories. Snakes don't have membrane in that part. वो लोग सिर्फ defensive animal, that's it. I'll tell you about तो आप लोग ने ये सुना होगा कि मैंने नाग को, मेरे मतलब गांव में किसी ने एक सांप को मारा था और दूसरा सांप आया। What happens is, ऐसा होता है, ठीक है, scientifically it is true. If you kill a snake, there are chances that the other snakes who are traveling by from that area comes at that place. I'll tell you the main scientific reason. Whenever you're killing a snake, maybe it's a male or a female. So every snake contains pheromones. Pheromones are what? It's a sex gland through which they attract a male or a female for mating. Okay. So when you kill a snake, that pheromones, they get scattered on that particular piece, and it gets spread out on our body, on our shoes, on the stick through which we are eating, and we just pass out, like, you know, we just go home like that only, and we cannot smell it, we cannot see it, but the other snakes who are traveling by or they're searching for food, they get the smell, they sense it, and they are like, okay, there's a male or a female who is ready to mate, and I have to go and mate with that person, with that snake, and that is why they come. And what we think, we humans, we are always narrow minded and aggressive, and we are like, सबको सिर्फ गलत ही सोचना है हमें, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे यार मैंने इसको मारा, ये बदला लेने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता, उनके पास अगर इतना दिमाग होता तो आज हम शायद बचते नहीं। और snakes can't tune on musical instrument. First of all, snakes को कान नहीं होते हैं, सांपों को external ears नहीं होते हैं, they cannot hear as we do, हम लोग जैसे नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। वो लोग एक अलग सिस्टम होता है, अगर उसने डीप में जाओ, मैं पूरा को टेक्सोनॉमी स्टडी करने के लिए उसके बारे में, तो इट विल गो टू डीप, फिर 4-5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो क्या होता है ना, जब नाग पंचमी के दिन जो भी वो सपेरे होते हैं, जो बजाते हैं, बीन बजाते हैं, तो व्हाट दे डू इज दे डोंट कीप इट स्ट्रेट, they don't keep it straight. Okay, सांप अपने डिफेंस में क्या करता है ना, कि वो बीप के साथ हिलता है, उसको लगता है कि अगर मैं उसके साथ हिलूंगा नहीं, अगर उसके साथ घूमूंगा नहीं, वो उसको काटने के लिए घूमता है उसके साथ, वो उसको काटने के लिए उसके साथ घूमता है, और उसको लगता है कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही खड़ा रहूंगा, मैं अगर यहाँ पर ऐसे ही रहूंगा और मैं अगर इसके साथ जाऊंगा नहीं, इसको अट्रैक्ट नहीं करूंगा, उसको अपना दिखाऊंगा नहीं अपना गुस्सा,
तो वो शायद मेरे को पीछे से मार सकता है या साइड से मार सकता है, तो वो उसके साथ घूमता है. Okay, so what to do when second snake comes in front? Nothing. Run. Okay, that's a good answer. Okay, just call the rescuer. That's it. First of all, why do you have to kill a snake? Don't kill a snake. Nothing is going to happen. और सेकंड सांप क्या, आपके एरिया में जितने सांप वहां पे ट्रैवल करते रहेंगे सब आ जाएंगे बिकॉज ऑफ फेरोमोन्स. Okay, so snakes doesn't dance on tune, they are just like, you know, they are just being alert on what is going on. Okay, वो जो चीज हिलती रहती है, बांसुरी जो जो भी है, ठीक है, बीन जो बजती रहती है और जो घूमती है, ठीक है, वो उसको देख के घूमता है. उसको लगता है कि आई शुड बाइट इट सो दैट मेरे को वो काटे ना, उसको वो मेरे को मारे ना, ठीक है. ही जस्ट बीइंग अलर्ट ऑन दैट थिंग, दैट्स इट. वो नाच रहा नहीं है. मंत्रास एक्ट आफ्टर स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट. नो 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 नो, mantras kuch nahi hota. If you're bitten by a scorpion by any chance, okay, the first thing I'll tell you, my preference is put vinegar on it, because that is definitely going to help you for a certain period of time. आपको स्कॉर्पियन बाइट के बाद आप बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा. I have been through it and I'll tell you, go for vinegar. First thing you have to do is put vinegar on the mark where you have been bitten by the scorpions. Snake bite, don't do anything, don't do anything. Okay, directly go to the hospital, and the only hospital which you have to go should be a government hospital. In India, all the private hospitals, they are not allowed to keep the anti-venom. Only government hospital has the permission to keep anti-venom with them, and they have good doctors. Okay, don't be like, okay, हमारे बहुत पैसा है, we can go to private hospital. It's just waste of time, because private hospitals आपको वापस government hospital में shift किया जाएगा. Don't do it. Okay, next slide. What do you think about this photo? आज मुन्ने वाला सब, wow. Editing, Nice editing. editing. It's editing, okay? It's all editing. Next photo. What do you think? What do you think about this? Edited. No, sir. It's It's real or real. no? Real. Real? Are you sure? Might be someone has done a nice joke keeping all the toys like this on the road. I've seen like these toys, मतलब ऐसे pranks देखे हैं मैंने जो ऐसे होते हैं roads पे in front Okay. of you also. Okay. Next slide. जिसने बोला था it's real, हाँ, वो next slide देखना. Oh my God, अभी तो 3 मुंडे रहते, अभी 5 मुंडे कैसे हो गए? How? जादू भी वाला सांप. ये मेरे को वो इच्छाधारी वाला सांप लग रहा है, पता नहीं क्यों. This is the real picture of that photo. It's a king cobra. It's a very beautiful snake, and I call him Majesty. He's just a Majesty snake. Next. Oh my God, यहाँ पर तो शक्ल भी आ गई है उसको. Wow. Plate. This is all what people do on social medias, and this is all fake. Only the first picture on the left top, it's a real one. Other all are fake. Next slide. Next slide. Where do snakes find? We find snakes. This is all places where we mostly find places in wild or beside a house. Okay, if it is not inside a house, so this is where you can find it by any chance if there is a snake. ऐसा नहीं कि मिलना ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है, मिल सकता नहीं भी मिल सकता. It's okay. Go for the next slide. So कार्स के अंदर से पाइथन निकालना या कोई और स्नेक निकालना, इट्स वेरी कॉमन फॉर मी. अभी तक मेरे बहुत सारे पाइथन रेस्क्यूज, बट आई टेल यू 80% ऑफ माय पाइथन रेस्क्यूज आर इनसाइड कार्स. माय रेस्क्यूज, माय पर्सनल. अब मेरा लक खराब है तो मुझे पता नहीं, बिकॉज पाइथन को कार से निकालना है या ऑटो से निकालना है, मेरे को नए बोलते 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा चले जाता आराम से उसको निकाल, बिकॉज वो इंजन में पूरा घुस जाता है. सो व्हाई snakes go in cars and hide it? Because it's during the monsoon season and during the summer season, as I told, कि सांप ठंडे खून वाला जानवर होता है, तो उनको हीट चाहिए होती है, तो that's why they go. Can you tell me which is the snake on the left side? One on the left side, yeah. I want you to tell me which is circled. Can please anyone speak up and tell what kind of snake it is? The right one is python. You can anyone tell it. Which one is the left one? Russell. Huh? Russell one. So see the pattern and tell me. See the pattern and tell me. काला कलर दिख रहा है, काला सफेद कुछ दिख रहा है?
क्या कौन सा है? Come on, tell me fast. We don't have time, guys. We have to close the lecture fast. Come on, speak. We don't have time. So it's a checkered killback on the left hand side, okay? It's a checkered killback, and can you see the video? Ki Python कहाँ घुसा हुआ है? I'm trying to remove it. I'm struggling my level best. I'm doing my level best, but okay. अब शायद दिख जाए. Can you see it now? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So you Okay. do So it you with bare rescue? hands? So yeah, I do it. Every person has a different way of rescuing, and after I removed them, so this is how big it was. It was a python, and this was in Kandivali East. Okay. Next slide. So this is a very dangerous situation for the rescuers and for the snakes also. I'll tell you the left hand side, the photo, it's a checkered kelpie. If it is a non-venomous species, it's okay for us, for rescuers. It's being safe because वो अगर काटेगा तो भी कुछ होगा नहीं. But when it is a venomous species on your right, which is a Russell's viper, क्या होता है ना कि जब हम पकड़ने जाते हैं, जब उसको नेट से छुड़ाने जाते हैं, तो सांप ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, बहुत ज्यादा पेन में होता है. तो he tries his level best to bite you. He is so defensive that time. Is so defensive, and he tries his best. We have to do his proper head catch. Head catch करने के नाम पे अगर आपने proper नहीं किया, वो अगर आपसे हाथ से छूटा, तो he will definitely bite you. He is definitely going to bite you that time. Okay, so yeah, that's the thing. Just a minute. I need to take some pictures. I forgot. So if you spot the snake, what is the thing which you should do? Okay, observe the situation and stay as far as possible. This is the main thing. सांपों से पहला दूर रहना. You have to observe the situation. कोई आजू बाजू नहीं जा रहा है, कुछ नहीं. आपको डरना नहीं है, आपको सांप मारना नहीं है. Okay, and you guys have to become a leader. Okay, I want you to become the leader. You got that much of knowledge today that you can actually become a leader at that time. Okay, you have to like leader in the sense you don't have to go and rescue the snake. Okay, no, you're not doing it at all. Okay, I'm not at all telling you or I'm not at all saying you to go and rescue it. No, handle the crowd, understand the situation, call a rescuer. Okay, that is the best thing what you can do and become a leader. You can handle the crowd because that is the most difficult thing which we have to face. In Dada, there was a time in Dada, like 3 or 4 years back, I rescued a snake, a ranch snake, inside a car. And I'll tell you, वो एक सांप के लिए मैंने वहाँ पे ना बाजू में आजू बाजू like on the road, there were almost 200 people just waiting to see that snake. And it was so difficult for me to rescue it because वो अंदर घुसा हुआ था and I have to remove it. 200 जनों के बीच में से वो और फिर वो एक सांप बाहर निकलता है और सब डर के भागते हैं इधर उधर. So you have to, someone has to be there becoming a leader because we cannot do everything. Okay, we have to manage the crowd, we have to manage the snake, we have to understand the situation, so we need someone sometimes. Okay, so please, rescuers number, you'll be there. Do you have your channel show? No, not yet. The sir, does snake has twin, like one body towards, yeah, that I told you about it. Yeah, snake has that. And that's a very rare condition. There's certain condition, there's a certain name for it, I don't recall it, but yeah, there is a snake like that. And it's a very rare condition. और फिर keep observing the movement of the snake. Yeah, this is you what you have to do. Okay, अगर आपके घर के आसपास है तो आपको ऑब्जर्व करना है कि वो कहाँ पर जा रहा है from a far distance. Okay, you don't have to go close, from a far distance, कि बस आपको पता है कि साहब कहाँ पर जा रहा है, ताकि कोई रेस्क्यूअर है तो you can tell it हाँ वो वहाँ पर गया and उसको जाके उसको रेस्क्यू निकाल सके. Okay, go the next slide. I guess we are done. Do's and don'ts. Okay, if anyone is bitten by a snake, okay, उसको देखो मत. I'll tell you. First thing, moral support is the most important thing. Okay, मेरे एक दोस्त को I'll tell you. One of my friend, he got bitten by a cobra in 2015. 20 जून 2015. He was bitten by a cobra. Okay, the only reason why he survived was because willpower. His willpower was strong. अगर उसकी जगह कोई और होता वो definitely मर चुका होता because उसको जब bite हुआ था it was like 11
इन द मॉर्निंग, और उसके बॉडी में जब फर्स्ट एंटीवेनम डोज गया था, दैट वाज 5 इन द इवनिंग. 5 in the evening. Everything what he did was on his own support. Okay, and we were there for his moral support, because वो hospital तो जल्दी पहुंच गया था. But exactly what happened is, these hospital people, government hospitals, you know how they work very slowly. Till that time you don't put pressure on them, they are definitely not going to work. So see to it that you give moral support. You see the time of the rescue, कि कितना bite of the rescue, कि कितने बजे bite हुआ है. Okay, and yeah, this is very important. You take the photo of the snake if possible. Okay, if possible, or else we rescuers will be called. I can see the mark, I can see the symptoms, and I can tell what kind of snake it was जिसने काटा था. Okay, but अगर photo मिल जाता तो that more way easier. Keep try to keep bitten part below the level of heart. हार्ट के लेवल से नीचे रखना वो पार्ट को. अगर हाथ पे काटा है तो ऐसा ऊपर ऊपर नहीं लेना, मूवमेंट नहीं करना. यू डोंट हैव टू डू दैट. ओके, रिमूव ऑल टाइप ऑफ ज्वेलरी, थ्रेड्स एंड एक्सेसरीज. अगर आपके बॉडी में जितने भी जो भी हो गए ज्वेलरीज, ओके, रिमूव एवरीथिंग बिकॉज अगर आपको यहाँ पर काटा है ना, आपने ज्वेलरी पहना, तो ऑब्वियसली दैट हैंड इज गोइंग टू स्वेल. ओके, वो सूजने वाला है हाथ, तो इट्स बेटर टू रिमूव इट. It's better to remove it. Everything on the entire body, because कहीं ना कहीं कुछ ना तो कुछ होगा आपके बॉडी में, और आपका ब्लड प्रेशर पे बहुत फर्क पड़ेगा उस चीज से, बहुत फर्क पड़ेगा. तो बेटर इज टू रिमूव इट. ओके, कॉन्टैक्ट इमरजेंसी हेल्पलाइन, हॉस्पिटलाइजेशन, डायरेक्टली गो टू द हॉस्पिटल, दैट्स इट. और कुछ नहीं कर सकते हैं. और जो नहीं करना वो है आपको, फर्स्ट थिंग आपने अगर सुना होगा कि अगर यहाँ पर बाइट हुआ है, समझो यहाँ पर कभी यहाँ पर काटा, ठीक है, तो यहाँ से कट कर देने का. नो, नेवर डू इट, नेवर डू इट, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्चुअली किलिंग द पर्सन. जब यहाँ पर कभी कोई सांप काटता है, ठीक है, यहाँ पर कहाँ पर काटेगा, या कहाँ पर भी आपके हाथ पे काट लिया, ठीक है, या कुछ भी गलती से भी जहाँ पर बैठ, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, यहाँ पर कहाँ पर काट लिया. ओके, तो यहाँ पर अगर गलती से काटा है, तो एक उस नस से, एक वेन से वो वेनम मेरे बॉडी में जा रहा है, राइट, एक वेन से जा रहा है. व्हाट यू डू इज यू कट इट फ्रॉम हियर. ओके, वो यहाँ से एक वेन में जा रहा है, बट यहाँ से उसको और 8-10 ओपनिंग मिल गई, बिकॉज इट इज इन योर ब्लड, राइट, इट इज इन योर ब्लड. इट गेट अफेक्ट व्हेन यू इट गेट्स इन कांटेक्ट विद योर ब्लड. तो खून बाहर तो निकल रहा है, ठीक है, बट वो वापस मिक्स भी हो रहा है, वो और आपके बॉडी में जा रहा है. तो कभी नहीं करना है, कभी बाइट नहीं करना है, और ब्लड लॉस से भी आपकी मौत हो सकती है. तो कभी नहीं करना. ओके, don't stick the word, कुछ भी नहीं करना है. And the best thing what you have to do is just tie the whole hand with crepe bandage. Okay, और crepe bandage मतलब जो पट्टी होती है, पता है, वो गर्म पट्टी, उससे आपके पूरे हाथ को बांधना है, जहाँ पे भी काटा है वो पूरे पार्ट को बांधना है. और ऐसा बांधना है कि वो टाइट भी नहीं होना चाहिए और लूज भी नहीं होना चाहिए. द रीजन वाई, अगर वो ज्यादा टाइट है तो आपका जो ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो बिल्कुल नहीं होगा, एंड दैट इज टू रिस्की. You will definitely survive after that. You are definitely going to survive after that, but the only thing which is going to happen is you have to cut that part, you have to amputate that part. Okay, so it's better is not to, like, you know, वो पूरा बांध के ना रखें. Beside that, I'll tell you what to do is कैसे बांधना है. एक पेन इजीली उसमें से आर पार होना चाहिए, easily movement होना चाहिए एक पेन का. That is how you have to tie it, because that's the best thing. That's the best thing how you can tie it. Okay, so because उससे क्या होगा ना कि वो ज्यादा फास्ट नहीं होगा, ज्यादा स्लो नहीं होगा. It will be normal. Your blood will be normal. ठीक है. Second, और हाँ, फिर आप लोग ने सुना होगा कि वो पंपिंग मशीन आती है कुछ, फिर डॉक्टर के पास जाना, आपके लोकल डॉक्टर के पास नहीं. What happens is, आपको जब स्नेक बाइट होता है तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कैसे होता है अपने इंडिया में, they remove the blood of your body. Okay, they एक बॉटल निकालेंगे, they will take a blood test and they will check how much blood, like venom quantity is there in your body. आपके बॉडी में कितना वेनम गया है, और उसके क्वांटिटी के हिसाब से ही आपको एंटी वेनम मिलता है. कोई इंसान होता है जिसको एक एंटी वेनम बॉइल लगता है, कोई इंसान होता है जिसको 40 एंटी वेनम बॉइल लगता है. Okay, one of my friend who was bitten, he got 35 anti venom balls. Okay, so it depends कि आपके बॉडी में कितना वेनम गया है. और मेरे दोस्त को तो एक ही दांत लगा था, सबको ऊपर आगे एक ही दांत, और एक दांत उसको नखून पे लग गया था. So एक दांत से उसको 35 एंटी वेनम बॉल्स लगे थे, अनलकीली. और मेरे एक दूसरा दोस्त है जिसको हुआ था, उसको 3 बॉल लगे थे, जबकि उसको पकड़ा था अच्छे से. तो स्नेक्स का क्या होता है ना कि मोस्टली, आई टेल यू, मोस्ट
जो जितना छोटा सांप है उतना ज्यादा डेंजरस है, बिकॉज जब छोटे सांप होते हैं जब वो काटते हैं तो उनको अक्ल नहीं होता कि कितना वेनम डालना है, कितना वेनम रिलीज करना है, वो लोग एक साथ पूरा छोड़ देते हैं, एंड दैट इज वेरी रिस्की, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। और जो बड़े सांप होते हैं दे नो हाउ टू यूज द वेनम, and how venom actually affects them, helps them in nature, because they have to survive on that venom. they उनका अगर आप venom निकाल देते हो पूरा तो 24 आवर्स में या 48 आवर्स में वो पूरा रिकवर हो जाता है, पूरा भर जाता है उनके शरीर का थैली। बट उसके बीच में फिर वो अगर किसी प्रे को पकड़ते हैं और अगर वो नहीं मरा तो वो तो भाग जाएगा, वो लोग तो भूखे रहेंगे, तो दे यूज देयर वेनम वेरी केयरफुली। ओके, do we breed snakes in India for anti-venom? No, people don't breed snakes in India for anti-venom, but if in Parel, if you go Parel, there is a Hafkin hospital where there are snakes inside Hafkin hospital. They remove the venom of that. Okay. There are few people who rescue snakes and they give it to the people who actually remove venom and all, like who are authorized to do that. Okay, everyone is not authorized to do that. You are not supposed to do that, and that is a very risky thing. You should never try to catch a snake with the head. Never, never. It's very risky because if you don't catch it properly, he is definitely going to bite you with zara sa movement, and you are done. Go for the next slide. I'm sorry. Next slide. Okay, so you can note down the number for rescue in Mumbai, in and around Mumbai. So that's our main 24 helpline number of our NGO, and yeah, note down the number. Bhagesh, Yes, ma'am. yeah, I had a question. Yes, ma'am. You spoke about the crate, right? And it being one of the most dangerous ones. Uh-huh. So, do we find them in the city? And if, then to what floor do they really climb, kind of a thing? We have a good amount of crates in Mumbai, in and around Mumbai. The mostly, if you want crates, like I'll tell you particular region areas where I have find crates. If you go towards Mulund, Thane, Andheri, east. Okay, this is the way you are definitely going to find crates during the night time. RA Colony, Godbandar, Mira Road, that are places which are very good for crates. Like crates, they don't usually live like where there is nothing like jungle or something like that. नहीं मिलता है. Crates you will find where there are lot of venomous species, and venomous species are only where there are bushes and all. जैसा आपका अंधेरी हो गया, and like that kind of places. But crates, there is a good number of crates in Mumbai. Good number of crates. But they don't look as huge as the other snakes, right? Like No, they python and don't all. look huge. They don't look huge. They are bit small only. The largest size of the crate which I have rescued was 5 feet in Mumbai. Okay, okay. Now tell me this: that what is the how will a person know that if he has been bitten by a snake? Like you said that some of them don't even leave a tooth mark, right? Yeah, Then how you would a won't even person get know? any marks. You won't even get any marks. You will get symptoms, or if it is a crate bite, okay, and it happens only during the night time. If someone is sleeping outside, and that is only time. And this happens in the villages only. In Mumbai, we don't sleep outside mostly, so Mumbai में ऐसे symptoms नहीं होते. मुंबई में ऐसे चीज नहीं मिलता. But still, Okay, after the crate bite, the most important, the first symptoms which you get, बहुत ज्यादा पेट दुखता है, बहुत ज्यादा. जहां तक मैंने रिसर्च पढ़ा था, एक पेपर पढ़ा था, तो बहुत ज्यादा पेट दुखता है. They have to rush to the hospital because of stomach ache. okay. I think there's a question in the chat. Yeah. And how many times snake recurs is lost when I'm 24 hours, between 24 to 48 hours. और पूरा venom, पूरा पूरा खाली होने के बाद पूरा 24 to 48 hours. That's good. So when they remove these venoms, right, for medical reasons, like the Uh-huh. Hafkins and all, do Mhm. they have specific species of snakes, or they just randomly remove? Have research viper, they have cobras, they have crates. They don't do it with saw scale because India जो venom anti venom है, this is like चारों का first of all the type of
venom which we find in India is hemotoxic, cytotoxic, and neurotoxic. So तीनों का एक ही दवाई है. It's not separate for every snake like how other countries have. No, India में एक ही दवाई. It's all used for every snake, every snake bite. ASV. So then Okay. swordkill, because swordkill is very small and उसका जो venom content है वो भी बहुत कम होता है, तो swordkill का इतना कभी नहीं निकालते. Acha. All Any right. other Girls, any questions? Yeah. any questions? Next slide, please. I want to see what is there on the next slide. I'm not sure. Yeah. Next slide, please. Come on, questions and answers. Comments. Come on, give me. Let me know. Any So question? are there uh, are all the antivenoms available in India or not? Like we There are have every. antivenoms available in India. There are antivenoms available in India. Okay. In hospitals you get it. Okay. And if you don't get, like, if by any chance, I'm telling you just for your safety, for your information. Okay. Uh, if anyone in your friend circle or anyone in your family has bitten by a cobra, any snake, oh shit, light went. Okay. Luckily my yeah, if any snake is, if any of your family member is bitten by a snake, okay, see to it. If you're not getting any antivenom available from the hospital, you can hear me, right? I'm audible, right? Yes, clear. Yeah. So the place where you will find antivenom is near Parel Hospital. Near Parel Hospital. Okay, that Tata Hospital, that side you need to find the medicals, and you have to take your proper description from the doctor, and only then you are going to get your antivenoms available from there. If you don't find it in the hospital where that person is admitted, this is the place where you will definitely find it in Mumbai, near Parel, nearby Parel, nearby Hafkin, you can say. Just search for all the medicals over there, you will definitely get it. Okay, so this was just for your knowledge and for your information, that if by any chance you don't get antivenom available, so there, that is a place where you find. And each antivenom vial is around 3,000 rupees. Each antivenom vial. And by any chance anyone bitten by your locality and you don't have antivenom nearby Borivali or something like that, you can directly contact an NGO, and we have antivenoms available for the rescuers. But if there is an emergency situation, we can give you, and you can return back the antivenom afterwards. Okay. Second, I think Bhagesh will take one more question, and then I yeah, would like if any student could propose the vote of thanks, because I'm sure uh, they've enjoyed it thoroughly. From my end, I'm always amazed at the way you talk so passionately about snakes and keep telling about how beautiful they are. Of course, yeah, they're very scary for us, but for you, they definitely mean something else. Yeah. yeah. Anyone who would like to propose a vote of thanks, girls? You said that snakes are area dominant, so does it affect them when you're removing them from the area? So what I do it, I'll tell you, I'll tell you. If I see any snake, what I do personally is whenever I rescue any snake, I don't relocate it a very long time. Agar it is a non-venomous snake, if it is a rat snake or something like that, I'll try my level best to make the person understand that it is a non-venomous species and it doesn't need to be removed from that area. If it is a venomous snake, I'll think twice. I'll see the locality, what kind of locality it is. I see what is the population over there of the humans. I see कि वहाँ पर कि सांप के आने जाने कितने हैं, what is the quality of food the snakes are going to get over there, and that is how I take the responsibility of relocating the snake. अगर मेरे को लगता है कि even if it is a cobra and he can survive, he won't trouble anyone, I'm damn sure I'll try my level best to make the person understand about it. और ऐसा बहुत बार हुआ भी है, और I have rescued and released the snake at the same place where I have rescued. Rat snakes and other non-venomous species, मेरे को phone आता है, I see the photo and I try to make them understand that it is a rat snake. It's non-venomous. It is definitely going to help you, because what happens is if you have rat snakes or any non-venomous species in your area, the first thing it does is it eats up all the rats. It eats up all the food. Okay, अगर मैं उसी से आपको वहां से निकालूं, ठीक है, definitely you have snakes over there, definitely 100% you have food over there. Okay, and you also have other snakes surrounding.
सराउंडेड, आजू बाजू के एरिया में बहुत होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर ज्यादा खाना है तो वहां के सिर्फ यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते? दे विल डेफिनेटली कम बिकॉज देयर इज फूड। ओके, तो या दैट द थिंग। तो मैं ये करता हूँ कि मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं किसी साहब को उस एरिया से ना निकलूँ। I make people aware because we have to coexist. We have to learn how to coexist because that is very important. And once we start doing it, hats off. I love that. So that's what I do. And about Nag Panchami, anti-venoms available. Cam Central Chemist is the one fund of Chem Hospital. That's one. Yeah, you said right. I heard about Nag Panchami. Nag Panchami, what I didn't get it. Anti-venom is available in some that kind of when I'm on this present. No, वो नाग पंचमी के दिन या फिर वो आप लोग बोलते हो कि नाग मनी and all, that is all fake. That is all fake. I'll tell you, you may find this on YouTube. People trying to remove a nag money from the snake head. What happens is they catch the snake before earlier. यहाँ से उसको कट करेंगे नीचे से हल्का सा उसका scales. They'll put a bead. Okay, they'll press it, and bring it over here. Stick it with Fevikwik over here, and they'll release a snake. They will go and search a client. एक बंदा उस आपके ऊपर नजर रखेगा. They will catch the snake client के सामने. They will cut the snake head from here, हल्का सा. And they will press and remove, and they'll be like, okay, this is Nagmani. See, that's all fake. That's all fake. ठीक है. Limestone is used for scorpion, but is it actually? I am not at all sure. मैंने कभी वो check नहीं किया, मैंने कभी वो किया नहीं. But I did it with vinegar, and it helped me a lot when I was bitten by a scorpion. It helped me a lot. My whole body was paining so much, like each and every joint of mine was paining so much when I had a scorpion bite. But it's okay. I enjoyed that trip also. So the why you don't okay, what if we are away from the hospital and bitten by a snake? Like, what will the instant remedies? I don't say anything for the instant remedies. No vinegar, nothing for snake bite, nothing. You should not do anything. Even if you are far away from the hospital, just do not panic. Okay, do not panic at all. Okay, sit in the car, just go. Don't run, don't get scared. You have 3 hours time. Okay, the less you get scared, the more time you get. See to it. आप जितना कम डरोगे उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा. 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आपको एक भी घंटे में बोल जाता है तो आपके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा बच जाते हैं. डिपेंडिंग आपको कहाँ पर बाइट हुआ है. अगर आपको मेन वेन पे बाइट होता है तो फिर आपके चांसेस कम हो जाते हैं. बट अगर आपको उंगली फिंगर्स पे है तो फिर डेफिनेटली द चांसेस इंक्रीजेस अ लॉट if you are not scared. Okay. I have seen a person who was bitten by on his main vein, जो आपकी यहाँ पे जो मेन नस होती है जो कटने से इंसान मरता है उसके ऊपर उसको बाइट हुआ and he is still surviving. And as 4 5 years back when Swapan was bitten in my village, my aunt and applied tuna on my leg. Okay, I am not at all sure about that. I'm not at all sure for the reason there is no pain. Then you have antibodies inside you. That's why you didn't had any pain. One of my friend he was bitten by a cobra. So I'll tell you, उसने अपने हाथ में ना ऐसा स्कॉर्पियन का गुच्छा उठाया, बच्चों का स्कॉर्पियन का, और उसको डंक मार रहा है. He has antivenom in his body of cobra because cobra has neurotoxic venom. Even certain scorpions have neurotoxic venom. उसके बॉडी में ऑलरेडी एंटीवेनम है, और जब भी कोई सांप काटता है और आपको बॉडी में एंटीवेनम जाता है तो वो एंटीवेनम आपकी बॉडी में 7 साल तक रहता है. 7 साल तक यू कैन नॉट गिव ब्लड डोनेशन, यू कैन नॉट डू ब्लड डोनेशन. ओके, तो उसको हाथ में ना बहुत काट रहा है और उसको कुछ नहीं हो रहा. उसको कुछ फील नहीं हो रहा, नथिंग, ही कांट फील एनीथिंग कि कुछ काट रहा है उसको. स्कॉर्पियन बाइट का कुछ फर्क नहीं पड़ता. Why do snakes move like S? How they don't have legs, right? They are just crawling, and that's the only way how they can move faster. I have seen snakes moving straight, but that's very slow. I'll show you the video definitely. Wait. I'll show you the video of python which I have rescued, and in that if you see python is moving, and it's very slow, but it's very slow. It's very slow. They move it, but they're like if they're moving straight, it's very slow. So you see this? He's moving straight, right? Yes, So sir. it's very slow.
So, and if they want to move faster, so they have to like move as like that. That is how they are going to get a rhythm, good rhythm, and good space for running. So I guess any more last few questions? Okay. Sir, in Rajasthan, there is a snake variety which moves sideways. What is the name of that snake? Called sidewinders, and it actually belongs to, you can also say it's Rochuriki soft-scale viper. Rochuriki soft-scale viper. The only reason why they move sideways is because if you ever notice, if you record it in slow motion, the sand is very hot. Okay, so उनका बहुत कम body part होता है जो touch होता है sand पे, वो almost हवा में रहता है. When they move, they are almost in the air. बहुत कम उनका body इस पे touch होता है. So, and the snake as Sochuriki social viber. Anyone else? Thank you so much for amazing sessions. Okay, thank you. I need to click a picture for this. Uh, yeah, any girl who would like to propose the vote of thanks? Before Yes, that, ma'am. I just have, yeah, just a moment, okay, Tanvi? Before that, I just have a message from Cinderella ma'am, since we have extended and taken time from her lecture. She's requested you people to take a 10-minute break and then join the lecture again. Okay? Over to you, Tanvi. Yeah, miss. Good afternoon, everyone. I'm Tanvi Ahir, an FIBC student from Dr. BMH College of Home Science. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event on the behalf of Dr. BMN College of Home Science. I would like to thank Bhavesh sir for sparing some time and sharing awareness about reptiles. It was a lovely session with ample amount of knowledge about reptiles. Lastly, I would like to thank all our participants for attending this session and helping us in making this event a grand success. Once again, I thank everyone present here. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for it. Thank you so much, Bhagesh. I'll get back to you Yeah. regarding the And formalities. Yeah. if anyone else, if you want to ask me questions regarding to snakes, and if you want to stay connected to my rescues, so I post all my rescue stories on my Instagram. So you can find it on my Instagram, which is Sai. I'll type it for you. And I also put like, I try my level best to make people understand how to identify snakes. I put all the identification marks and my new research papers and all, so you can get a good knowledge from there. That is my Instagram account, and you can go and check my stories, my highlights. If you want to see sea snakes, on the last one you will get sea snakes over there. You will get to know many things over there. I try my level best to just share my knowledge everywhere. And Yeah, great. Girls, we'll be uploading this on the YouTube, and please do go and like it, because the more you like it, the more it gets a viewership. All right. I already Yeah. started getting followers. Yeah. Thank you so much, Bhagesh, once again for being there. I'm sure we can have you for many more sessions. Yeah, thank you so much. Thanks. Take Yeah, care. yeah. Bye bye. Bye, girls. Yeah. Thank you. Have a nice day. Bye. Ma'am, there is no feedback form for this event. I will share. Okay. I will Okay. share. Yeah. Thank Yeah. you. Thanks, Kaina, for sharing. Welcome.